सो एलिमेंट आपने एक सिंगल लाइन बना यस 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 इसको ऑटोमेटिकली चाहिए नाउ से करने के बाद आई रियलाइज्ड कि मुझे उसको दो पार्ट में डिवाइड नहीं भी करना है डिफरेंट सेक्शन प्रॉपर्टी ऐसे हैं एक बार के लिए बांट दें ओके बट आपने ये करने के बाद रियलाइज किया तो आप कैसे सिलेक्ट करके उसको डिवाइड करो ओके areas not for line okay. So I don't see such splitting option any option मुझे नया ही बनाना पड़ेगा तो अगर आपको इसको दो एलिमेंट्स में उसको डिवाइड करना है बट वो ऐसा रहे कि आपका चाहे आप दो एलिमेंट्स में करो या तो एक एलिमेंट्स में रखो फाइनली आपका जाके वो छोटे छोटे पीसेस में तो बांटा जाने वाला है जैसे यहाँ पे आई रियलाइज कि मुझे क्रॉस सेक्शन ही अलग डिफाइन करना है अच्छा क्रॉस सेक्शन अलग डिफाइन करने के लिए देन यू विल हैव टू गो फॉर समथिंग दिस मैं इसको जाके यहाँ से ये लाया मैंने ये करूँ तो इस केस में मुझे अगर फ्री लोड डिफाइन किया होता तो लोड रिडिफाइन करने की जरूरत नहीं हो एलिमेंट लोड डिफाइन किया होता तो no in both the cases you don't need to अपने एलिमेंट छोटा कर दिया सही है मैंने क्या किया देखो ये जो एलिमेंट था इसको मैंने छोटा किया तो मेरा जो सपोज मेरा लाइन लोड रहता तो लाइन लोड भी मेरा छोटा होता अभी दूसरा जो हाफ है मैंने इसको कॉपी करके आगे पेस्ट किया है तो उस टाइम पे लाइन भी गया और लाइन का लोड भी गया ऐसा है अभी अगर बस आपने क्रॉस सेक्शन चेंज किया लोड दोबारा लेंगे तो फिर वो सेपरेट सेपरेट लगेगा जो ठीक है अगर आपको सपोज ये लोड अगर आधा करना है तो इसको ऐसा पकड़ो और इसको ड्रैग करो ठीक है डन व्हाट एल्स ठीक है सो वी स्टार्ट विद दैट एग्जांपल 5 से कुछ देखता हूँ So you got sense of the entire workflow now, right? इससे थोड़ी बात करने के लिए थोड़ी कोई बात नहीं so let's just proceed so what I'll do is training day 1 and session 2 I'll say so we will go very slowly you need to create a new folder once you have created a folder what you need to do is क्रॉस करो इसको क्रॉस करो ये यहाँ पे पीछे वाला नहीं हो रहा है वही आ रहा है only for remainder of the call अच्छा आप ऑफ कर लो तो ऑन कर लो अपना आप अपना
बेटा तुम अपना माइक और स्पीकर दोनों ऑन करो। स्पीकर तो हटा दो, सिर्फ माइक ऑन करो। डायरेक्ट आवाज से बात। माइक ही ऑन करना पड़ेगा, स्पीकर Mic on करना। So what next we do is wonderful. So what I further do is I go and copy this path. So please copy the path above. पाथ है उसको मैं कॉपी करूँ और मैं पिछला वाला जो मॉडल है इसको मैं बंद करता हूँ just to avoid confusion in the later stage. I also shut down my Sofistik Plus. I also shut down my bin graphs and if at all anything is there. Yeah. Further, what I do is I go to search bar and type in SSD 2025. SSD opens which is Sofistik structural desktop. Okay. I create a new project. So I say new and I browse to the folder where I created, which I created for this. Already I have copied the path. So I can simply do Control V and I simply say save and I give it a file name. What is that we should give? PSC composite dash R0. थोड़ा अपना नाम देते हैं P35 to P36. Okay. And I say save. ये आपने ऑलरेडी किया है क्या? तो आपने एक फोल्डर क्रिएट किया। फोल्डर कहाँ है देखिए? फोल्डर नया फोल्डर आपका ये सिंपल विम 2 क्या? ये So in this what we do is we copy the path. We went here. We said new project. This thing. मैंने path को पेस्ट किया ताकि वो वहाँ पे चले गए वहाँ पे ऑलरेडी आपने तो ऑलरेडी मॉडल कर चुके हैं आप सेव कर दिया उसी फाइल कर रहे हैं ये यहाँ पे आ गए। Now coming to title. Title is chainage kilometer 1 plus 200 comma P35 dash P36. Okay. So these are the title that would appear on top of the report that gets generated automatically. You select IS, that is Indian Standard, IRC 112, system is 3D, gravity direction is negative Z axis, group divisor is 10,000, and units very important, don't forget units please anyone. Structural engineering, which stands for sections in millimeter and system in meters. So it is just for the sake of our convenience और मैंने जो reference model फाइल है वो इसके हिसाब से मैंने सेट करके रखा है इसलिए। हाँ पर 3 डॉट्स पे क्लिक करो और ऊपर जाइए सर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग and you simply need to say okay. So what has happened is your इसका जो resolution है उसके वजह से it is आपका okay हाइड हो चुका है। Okay, how can I address it? Enter mark के भी हो जाएगा। Yeah, substance in millimeter and system in meter. So, your project name exists already. It will be overwritten. The moment you say okay, you see in front of your screen, yeah, this viewer pops up. But maybe I am going to propose that viewer should not come up. We need this system visualization. And what we further do is we need Sofistik plus X to further model our geometry. So I simply double click on Sofistik plus X and
Sophie plus X opens in the background. So all are with me until now. Yeah. If you go here to the home, here at the top right corner, you will be into three-dimensional space. Okay. So if you go here, it will be top view. This is elevation. This is home. And I do Z enter and A enter, which means zoom all. नहीं हो रहा है आपका? अच्छा आपके इसमें आ ही नहीं रहा है. फिर आ नहीं रहा है ना कॉर्नर ये क्यूब है ना? ये देखो होम आ गया. ठीक है. So if you click on your scrolling, what do you call it? Scroll bar. Scroll bar. Scroll और कुछ नाम है. हाँ ठीक है. तो उसको अगर दबाया तो ये पैन होता है. अगर मैं शिफ्ट दबा के स्क्रोलिंग बॉल अगर मैं प्रेस करता हूँ तो ये रोटेट वगैरह होता है. ऐसा. ठीक है. स्टैंडर्ड व्यू तो मैं हर बार ये जाके होम पे क्लिक करता था कि वो 3D में अच्छा दिखता है मेरे को. और हर जो मॉडलिंग हम करेंगे कभी प्लान व्यू में जाके मॉडलिंग ना करना. Because if you are joining a line from here to there, you may not join it in the same plane. It may be into different plane in the vertical direction, which is not correct. So I recommend modeling in the 2D wireframe view always and in the three-dimensional space. This is the correct approach. Okay. What I further do is I go back to my AutoCAD and so let's first model our cross sections and materials and all. So I go to my materials and M20 ग्रेड का कंक्रीट डबल क्लिक करता हूँ, M40 कर देता हूँ आपका और उसको काइंड ऑफ मैं नॉर्मल हार्डनिंग करता हूँ and I'm happy with it. ठीक है. ये थोड़ा मेरे को दिखाई. अच्छा रेफरेंस है. ठीक है. कुछ इनके थ्रू पूछना नहीं चाहिए. Nice. So what it has is next is M35 grade concrete. Okay. Select this, click on this, right click and I say clone, which is now number 3. Double click and I say classification is 35 grade का मेरा concrete model हो चुका है. ऑटोमेटिक आ जाता है उसमें. नेक्स्ट आईडी. Everyone is done with modeling of 3 materials. Very nice. So further what we do is we need to define M35 grade concrete with 0 self-weight. Okay. We need to define M35 grade concrete with 0 self-weight. So what we do is we select here number 3, right click, and I say clone, which is material number 4, and we simply go and say that self-weight here should be 0. और समझना चाहिए इसलिए उसके नाम में भी मैं डाल देता हूँ ऊपर टाइटल में 0 self-weight. Okay, clear everyone? Is it fine until now? Clear? I simply say okay. And I need to define one more material which is for my pre-stressing steel. Okay. So I go to materials, right click and I say new material from design code. और यहाँ पे जो type आता है, type modify to pre-stressing steel. मुझे बना भी नहीं यार. 2062 है. अच्छा, तो 4/6 तो चेंज किया ना. तो this is a bit of concern. Frankly, क्या होता है कि अगर आपने कोड अगर इनिशियल अगर सेट नहीं किया ठीक है,
तो आपका बाद में आप कोड को नहीं बदल सकते, बाकी सब कुछ बदल सकते हैं एक्सेप्ट कोड. But not a problem. What we will do is we will go by IRC 21/16. ठीक है? ये करते हैं हम. Classification let's keep 1600. ठीक है? We stay with this simple से okay. तो इसमें भी वही मटेरियल आएगा, कुछ अलग हो जाएगा ऐसा नहीं है. बस उसमें क्लासिफिकेशन 1600 रखता हूँ और बस ओके बोल देता हूँ. ठीक है? We have modeled 5 materials. And also this tutorial says 5 materials. Okay. Now what we do is we need to further go on to model our cross sections. So we go here to cross sections and we have got now how many cross sections to model? 3 cross sections, right? One is for our diaphragm, one is for our mid section, one is for our end section, right? So diaphragm being a rectangular cross section, we can simply model it as standard section. So let model a diaphragm that has got 450 mm width and 1000 mm depth. That will be for our end diaphragm. Okay. So I go to cross sections. Please model standard section, new standard section, rectangular beam. Width is 400 mm and the depth is 1000 mm. Okay. Done everyone. Postpaid का सारा डिटेल दिया मैंने. Now he rolled analysis. So you can either consider reinforcement, yes, or you can ignore reinforcement during आप वहाँ पे setting कर सकते हैं analysis के time. लेकिन reinforcement पकड़ा ना पकड़ा आपके results में कोई variation is like negligible. But if you are going for non-linear analysis where you are considering cracking and all, then yeah, it starts to play a role definitely. I am also touching this thing which is a reference point, and from elastic center I am changing it to top center. And please observe the difference and let me know what the difference is. Okay. And further, what we do is you get what this top center is, right? I need not explain. Yes, sir. आपको भी clarity, sir. उसके साथ यहाँ पे आएगा. अगर वो यहाँ पे शेयर से यहाँ पे सेंट्रल पे रहता तो वो वहाँ पे आता. So now it will be eccentrically modeled in short. ऐसे okay. Good. So I need to create an intermediate diaphragm that has got lesser depth of 800 mm only. So क्या करेंगे आप? Right click, clone, edit text, and हम इसका डेप्थ करेंगे 800. बाकी सब कुछ सेम रखेंगे. इसमें एक गलती कर दी मैंने कि उसका जो कंक्रीट जो रहेगा वो M35 ग्रेड रहेगा. अस्टीन से रहेगा ना वो. तो मैं इसको जाके यहाँ पे जाके अपडेट करता हूँ M35. मतलब इसकी बात कर रहा हूँ मैं डायफ्राम की, बट नॉट विद जीरो सेल्फ वेट. So clear until now? Yes. समझला क्या? Sorry, समझा क्या? Yes, good. So next is we need to create the cross section for our mid section, right? So I go to cross sections, right click, new solid section, then post concrete, right? Yes, sir. Are you following? Yes, good. So in this, what you need to do is you need to give it a name. I'll give it a name. Mid section. Yes, sir.
सॉफिट प्लस में तो कर रहे, अच्छा आप सॉफिट प्लस में नहीं कर रहे थे क्या? अरे नहीं, हेलो एक मेरे थोड़ा हिंदी थोड़ा सही नहीं है, मैं आपको डालिए ऐसा नहीं बोलता हूँ, और ऐसी टूटी फूटी हिंदी है तो आप प्लीज इसको समझ लेना, ठीक है? वेरी बैड है, आधी मराठी आ रही है, सॉरी फॉर दैट। अरे बात वो नहीं, हिंदी तो मुझे आनी चाहिए, आपको मराठी आनी चाहिए, ऐसे कुछ मैंडेटरी नहीं है। और मतलब मैं स्पेशली व्हेन आई स्पीक टू, मतलब आप बोलना चाहिए, लेकिन मराठी में ऐसे नहीं बोले, तुम ही बोलता। सो तो मैं कभी कभी सर के लिए भी निकल जाता है कि तुम ऐसा करना चाहिए, तो मैं बहुत रिस्पेक्ट से बोलता हूँ, बट दैट्स नॉट द वे। सही है ये ना, इधर हम डबल क्लिक करेंगे ना तो यही इसमें प्रॉपर्टी इधर आ जाता है। कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सो तो प्लीज उसका थोड़ा समझ लेना सर आप, ठीक है? 12 लेकिन मेरे जैसे पागल तो नहीं रहेंगे हमें ऐसे बोलने वाले। नहीं इस टाइप में हम इसका, हाँ M40 ग्रेड इज दैट इज फाइन, ठीक है। नेक्स्ट ये टाइप की बात कर रहे हैं, ये इसमें टॉर्शन मोमेंटम की मिस्टेक है, जो भी हम आगे तक रिलीज करते हैं उसमें टॉर्शन लेस नहीं जाएगा, तो उसको हम क्या करते हैं तो वो टॉर्शन आएगा, आएगा, I wanted to be there, I wanted to be converted to longitude, या तो उसको यहाँ पे आप जीरो कर सकते हैं, लेकिन तो मैं तो सिमिलर नहीं आएगा, एरर नहीं आएगा उसमें, लेकिन ये मैं करते नहीं आ रहा हूँ मेरे प्रैक्टिस में। नो टॉर्शन का डिजाइन करते हैं। I have been doing it in stack, no doubt, लेकिन यहाँ हम्म। सॉफ्टस्टिक में कभी नहीं। स्टेजेस, आपको रेनफोर्समेंट वगैरह मॉडल करना है तो आप इसमें रेनफोर्समेंट मॉडल कर सकते हैं वेरी नाइसली, जैसा रेनफोर्समेंट आपको चाहिए वैसा सारा इसमें काफी अच्छे से आ जाता है, मच बेटर देन व्हाट स्टैंडर्ड सेक्शन हैज बीन, ठीक है? स्टैंडर्ड सेक्शन का जैसे रेनफोर्समेंट वो बहुत लिमिटेड है कैपेबिलिटीज, इसमें काफी ज्यादा है, लेयर वाइज डिजाइन, स्टेजेस और न्यू stage number 10 is for my girder activation. Cross section, right click, stand solid section. स्टेजेस को कब बनाते जब हैं, तक वो नहीं कोई भी एलिमेंट से मिला दिया गया, जब कोई स्ट्रक्चरल एलिमेंट एक्टिवेट होता है तो दैट इज अ न्यू स्टेज, नोड्स एक्टिवेट करने के लिए उस पर्टिकुलर स्टेज में छोटे छोटे स्टेप्स बना सकते हैं। एब्सोल्युटली, इसमें भी वैसे, इसमें भी मैं क्रॉस सेक्शन में मैं स्टेजेस डिफाइन कर रहा हूँ क्योंकि मेरा क्रॉस सेक्शन दो स्टेजेस में एक्टिवेट हो जाता है, इसलिए मैंने वो डायफ्राम के सेक्शन में कभी स्टेजेस नहीं डिफाइन किया। Now I go to new stage, new, and I say new number is 100th construction stage, and we give it a name, launch activation. It's called. अपनी assignment डाल दो। And I simply say okay to it. And I got cross section number 3. 10 or 100. 10. Now what I do is I need to get my reference here, and I go to my AutoCAD file. और मैं इस बार क्या करता हूँ, ये दोनों भी कॉपी करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ। You know the way in selection in AutoCAD, right to left drag किया तो सारा वो सिलेक्ट हो जाता है। Control Shift C and I specify the point, the reference point, and I go back to Sofistik Plus and do Control V, and insertion point is 0,0. So are you all here?
आप क्या कर सकते हो? What you can do, this is AutoCAD, right? AutoCAD में ऐसे ही आप लेफ्ट टू राइट अगर आए तो सिलेक्ट नहीं होगा until ये पूरा window इसको कवर करते हैं. लेकिन आप राइट पे लेफ्ट गए आधा भी कवर किया तो फिर वो सिलेक्ट वो हैंग हो रहा है थोड़ा, खुलेगा. कंट्रोल शिफ्ट सी दबाया. कंट्रोल सी इज कॉपी. शिफ्ट सी बोला तो इंसर्शन पॉइंट मांगता है. तो ये मैं पॉइंट सिलेक्ट किया, मैं यहाँ पे आया. ये तो आपका डिफिनेशन वगैरह हो चुका है इधर से. ओके, कंट्रोल बी किया, इंसर्शन पॉइंट मांगता है तो मैं उसको बोलता हूँ 0,0. Right, so then we are on the same page. Further, what we now do is थोड़ी देर में. वो थोड़ी देर में. yes. Okay, so what you need to do is now you need to mirror it. So I do MI enter and go from this line to this line and I say yes, erase my source objects. Here I need to create boundary. Slow जाना है. Yeah. So we need to create boundary. नहीं इधर तक क्या है, रुक जाएगी. क्या दोबारा से. So are we all here? Yeah. We need to create boundary now, right? So what we do is there is an option for boundary here, solid boundary, basically this one, okay? And our material for girder is M40 grade concrete, and for we want to activate in construction stage number 10, right? We are here already. I get into the model space. There is no okay, apply, cancel button here, okay? Once you do this, straight away get here into model space. और यहाँ पे जाके ये पॉइंट इन एरिया का ऑप्शन है नीचे, पॉइंट इन एरिया. इसके ऊपर एक बार क्लिक करना है और फिर एरिया के अंदर जाके एक बार क्लिक कर. अच्छा, इसलिए क्या चीज होता है, तो यहाँ पे ना ये जो बटन दिखता है ना, ये बोलते हैं कि ऑटो हाइड. इसके ऊपर अगर क्लिक किया तो आपको ये स्पेस मिलता है काम करने के लिए. तो छोटा विंडो बनता है. अगर इसके ऊपर गए तो बड़ा हो जाएगा. You can just go now inside this. अब मैंने बाहर वाला बना लिया, नीचे वाला. ऊपर वाले का जो मेरा मटेरियल रहेगा वो रहेगा M35 ग्रेड कंक्रीट बट विद 0 सल्फेट. And construction stage number is 100 for that. You all follow me? And you need simply go and click inside this rectangle. We already have selected that point in area thing. So our geometry is modeled now. Boundaries are modeled, and I simply say close. You can do escape or just click on that close button. So here at the bottom, I see that it is modeled red in color. What I now do is, yes ma'am. What I now do is, I just give a run to this here at the top. नहीं एक ही सेक्शन एक बार. ये बस उसका रेफरेंस आगे यूज करने वाले आप अभी, मतलब बार बार ऑटोकैड चलाने से मैंने अभी लाके रखा. जब बाउंड्री हम करेंगे ना, जब पॉइंट इन एरिया में करेंगे तो दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड सेक्शन और वो मिड सेक्शन. अरे दादा, जो राइट साइड वाला है उसको भी अगर क्रॉस सेक्शन, सारे क्रॉस सेक्शन थोड़ी एक साथ मॉडल कर सकते हैं. अभी एक ही क्रॉस सेक्शन मॉडल करना है, मिड सेक्शन. मैं दो लाइन, एक लाइन एलिमेंट ड्रॉ करोगे, दोनों दो बन जाएंगे क्रॉस सेक्शंस वहां पे. नहीं
आपका कभी नहीं है सर, उसको खोल के कुछ बड़ा करके तो पोस्ट करके ऑटो एडिट जीरो करना सेल्फ जीरो से अरे यार तो भाई बिल्कुल दिखा है जीरो सेल पे ट्रैक हाँ सही है, और 100 स्टेज एक्टिवेशन का परफेक्ट पार्टी देंगे सही है। इसको इसको ऑटो ऐड करूँ कैसे? यस करो परफेक्ट इसके हो गया। अब बंद करेंगे आगे परफेक्टली मॉडल, ठीक है। So make sure that here you select this और इसको डिलीट करो एक बार, वो ग्रीन निकलना चाहिए। अगर सिलेक्ट करके डिलीट करने के बाद फिर से रेड आया है मतलब एक के ऊपर एक दो बार बाउंड्रीज मॉडल किया। ये ऐसा होता है क्योंकि क्या होता है जब आप पहली बार जब मॉडल करते हो तो वो आता है और फिर से जाता है, वो ग्रीन ग्रीन दिखता है। तो इसमें कुछ ऐसा होगा कि एरर आ जाए कुछ मैसेज आ जाए हाँ वो करता है, वो लेटर स्टेज में एरर देता है, लेकिन बाद में देता है। तो सोचा कि आपको बाद में नहीं आना चाहिए, अरे ये बहुत कॉमन मिस्टेक है और दैट इज लाइक ह्यूमन टेंडेंसी। मतलब ये इसमें देखो ये द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज नाउ फॉर मी इज, देखो मैं क्या करता हूँ, ये बाउंड्री पे जाता हूँ, ठीक है, पॉइंट इन एरिया बोलता हूँ, यहाँ पे गया मैं, ठीक है, ये आ गया, एस्केप किया मैंने, यहाँ पे गया फिर से, इसमें नहीं हो रहा है वो क्या, वो ग्रीन ग्रीन ही दिखते रहता है अनलेस आई डोंट रन इट, ऐसा। तो ऐसा परसेप्शन रहता है कि वो मॉडल ही नहीं हुआ, लेकिन वो मॉडल हुआ रहता है और नीचे जाता है उसका लेयर। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि फिर जाके उसके क्लिक करते हैं, लेकिन वो टाइम पे फिर डबल मॉडल हो जाता है। और ऐसे किसी को अगर पता नहीं के लिए दिखाने के लिए जाएंगे तो सही हो जाता है। Yeah, that's not the thing, but whatever the trust. But yeah, we are done with this, right? Everyone is done with the cross section. नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं करता हूँ। दो तीन बार देखो देखो मैं सिलेक्ट किया, डिलीट किया और मैं भी कंट्रोल जेड किया, दो बार किया दो बार किया मैंने। ये भी क्यों होता है वो भी थोड़ा देखते हैं क्या है इसका फ्लो है। डिलीट किया, वन इरेज फाउंड, कंट्रोल जेड किया, फिर ये क्या अंडरस्कोर यू आया, आई डोंट नो व्हाट इट मींस, फिर कंट्रोल जेड किया, दो तीन बार किया, आई डोंट नो व्हाट इट इज, लेकिन जब तक नहीं आते तब तक I give it a run, right? So your all everyone's cross section is analyzed, right? So you can see numbers below, you can see those trace points and all that's there, right? Okay. I close it down then if it is done. जो भी क्रॉस सेक्शन एनालाइज है यहाँ पे ग्रीन दिखाता है, नहीं तो रेड दिखाता है अगर सही से मॉडल नहीं है, कुछ इश्यूज है, रन नहीं हुआ है। हाँ उसको क्लोज कर दें। दोनों सेक्शन में लाया था तो उसका कुछ दूसरे सेक्शन में कुछ नहीं किया करते रहते एंड सेक्शन तो मॉडल करना है अभी, वो तो एंड सेक्शन था। ये जो बराबर है हाँ सर परफेक्ट है। नेक्स्ट डायरेक्टली लो कर सकते इसको देखो बस एक बार वेरीफाई करता, डिलीट किया
The previous one we वाला delete कर देंगे. ठीक है, looks fine. अब क्या करता हूँ मैं? मेरे को एंड सेक्शन बनाना है, तो मिड को पकड़ता हूँ, उसको क्लोन करता हूँ. सेक्शन प्रॉपर्टीज पे डबल क्लिक करता हूँ. मिड की जगह पे मैं उसको एंड बोलता हूँ. ये बोलता हूँ, राइट. अब मैं क्या करता हूँ, ये जो है इसका साथी, इसको जाके CO एंटर बोलता हूँ और यहाँ पे जाके इसके ऊपर पेस्ट करता हूँ. ठीक है, क्लियर ना? हम ऐसा नहीं कर सकते, इसको डिलीट कर दिया फिर उसको बाउंड्री लेके फिर कर सकते हैं, कर सकते हैं. कर सकते हैं. लेकिन उसमें आपको वो नंबर ऑफ नोट्स वगैरह, वो नंबर से एक साथ सेम आने चाहिए, वो तो देखना पड़ेगा. तो वो फिर हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं. कर सकते. आपका एफर्ट्स बढ़ जाएगा थोड़ा. हाँ, इसका जो राइट वाला था ना, कॉपी करके यहाँ पे रेफरेंस लाया इसके ऊपर. बस मैंने ये किया कि पहले ऑटोकैड में जाके लाते थे, अभी मैंने एक ही बार ला लिया दोनों. ला लिया नहीं, लाया, सॉरी. Okay, okay, okay. Yeah. So where is your old cross section? Wait. नया create किया. लो नया है. Wait. ये है ना आपका maybe. ठीक है. Okay. ठीक है, हो गया ना. Space. सबसे important, what we should have is we should have always all objects map options on. ठीक है, ताकि आप मतलब यहाँ पे मिड पॉइंट्स वगैरह देखो, पकड़ रहे हैं मिड पॉइंट में, तो आपके इसमें पकड़ ही नहीं रहता. तो यू कैन वेरी नाइसली गो फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस. अब क्या करेंगे, इसमें हम ड्रैग करेंगे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, here to here, here to here. Right. Done. Section positive. Okay. So here what I do is I simply drag my vertices from here to here, here to here, here perpendicularly, and I give it a run. ये देखो अभी ये red नहीं आ रहा, green आ रहा है. But if you go here at the back end, there is red. You can go and select this and it is red. तो कभी कभी अपन अपने को लगता है कि चला गया, but that's not the case. So I give it a run and the red pops up. Then I close it down. My next cross section is ready. Right? Clear to everyone? So you know that in practice for a project, you define your materials and cross sections usually only once. एक बार अपना होमवर्क फाइनल हो गया कि मेरे को गटर की क्रॉस सेक्शन ये होना चाहिए, कभी बात यूज नहीं कर, मतलब 35 to 36 का स्पैन बन गया, तो नेक्स्ट जो मैं बनने वाला हो वो भी ये टिपिकल स्पैन होने वाला है. मे बी उसका लेंथ मेरा चेंज हुआ रहेगा. ये 30 मीटर का है, वो होने वाला स्ट्रेच स्पैन की बात कर रहा हूं मैं. 30 मीटर का है, वो होने वाला है 32 मीटर का, 29 मीटर का. तो मैं सब कुछ सेम रखूंगा, बस मेरा वो जो मिड सेक्शन का वो जो है ना, उसको मैं ट्रैक करूंगा 1 मीटर से. ओल्ड फाइल खोलूंगा, उसमें क्रॉस मटेरियल से, क्रॉस सेक्शन से, लोड से, सब है. बस मेरे को अभी उसको अप्रोप्रिएटली ड्रैग करने है आगे. दिस इज द ओनली टास्क यू हैव इन योर नेक्स्ट मॉडल्स. तो इसलिए मैं बोलता हूँ एक प्रोजेक्ट को क्रॉस सेक्शन हम एक ही बार डिफाइन करते हैं ऐसा. हाँ, take it to the origin properly. में रखना उसको जरूरी है. Yeah, very important.
ये ठीक है, वो वाला डिलीट कर देते मतलब make sure that your origin is at top of your girder and bottom of your slab. ठीक है, clear to everyone until now. Snap options on कर दो. See, I'll repeat it for everyone. You should go to this place which says, first of all click on this, okay? इसको unselect किया तो आपका वो triangle वगैरह मतलब वो कुछ नहीं पकड़ेगा. ये करो, इसके अंदर भी एक छोटा एरो आता है, इसमें आपको सबको सिलेक्ट करना है तो go to object snap settings and say select all. Okay. ताकि आपका जो snap है वो सारा पकड़ेगा, mid point, end points, this, that, which is very important when you work with AutoCAD. Otherwise, आपके जो placements है, connectivities है, उसमें 2, 3, 4, 10 mm का वो मतलब error ही रहेगा, which would not make any sense. So there is a user, Sofistik user, who comes from RISE, और उनका प्रॉब्लम यही है कि उनको वो सब आते हैं लेकिन वो स्नैप करने को नहीं पता ही नहीं था उनको. तो उनका ऐसा बिलीव बैठा है कि ये नोड को जाके कभी पकड़ेगा ही नहीं वहाँ पे. वो मेरे को बहुत लेट समझा कि बट दैट वाज ओनली स्नैप. डूइंग दैट वो सॉफ्ट प्लस यूज करना छोड़ दिया और वो टेडी यूज करते हैं. तो टेडी से वो पक्का वो कनेक्ट होता है. दैट्स नॉट द केस. It's all about your snap thing, nothing else. ठीक है. वो एक बार मेरे पास केबल स्टिल आया, होरा का वो है ना, सेकंड वाला पूरा टेडी में बना शुरू कर रही थी. बट या हर एक का भी बोलते नहीं, अभी मेरे को ये पसंद आता है तो अभी वो सॉफ्ट प्लस खोलते ही नहीं, वो टेडी यूज करते हैं. ओके, let's move ahead. So what is the next step now? Anyone? So we need to generate our geometry, right? So for our geometry, we will be here in the model space. Let's do Control S, that is we save our model file. We go back to our AutoCAD and look for this particular geometry, which is at the origin. So I drag from right top to bottom left like this, so that I have select all the elements, and I do Control Shift C. It asks me to specify the base point. I specify this girder bearing location as my base point. I click on it and I go to my Sophie Plus and do Control V. It asks me to specify the insertion point and I give it as 0,0, enter. सर आपके पास अलग फाइल है क्या? नहीं कोई फाइल है. अच्छा आपका है. मॉडल स्पेस चलो, मॉडल स्पेस शीट से नहीं ले सकते आप. यहाँ पे जूम करो, यहाँ पे है, इसके अंदर है. करो जूम इन प्लीज, जूम इन. Yeah, शीट इज हियर. This is the one that I shared with you. Wait. इसमें तो बहुत सारे. आपका एक सेकंड. आपका आपका भी सेम. ये करने के ऐसे नहीं लिखे. नहीं वो तो ही सर. अच्छा तो आई थिंक सर कभी रिजेक्ट होगा. करो फिर से
अच्छा, so what does this do exactly? ये आपका आपने बनाया कर्व हाँ, बनी कर्व नहीं बना के स्ट्रेट लाइंस का कर्व भी ऐसे सॉफ्टवेयर में होता है इस तरह का प्रॉब्लम होता है स्ट्रेट लाइन का तो उसको आपको प्रॉपर देखना है तो आपको रीजनरेट करें okay, good, nice, thanks for that. Because see, you never select it like that. I'll show you how to select. ठीक है, मैं जाता हूँ AutoCAD में. आप क्या कर रहे हैं कि आप इसको जाके पकड़ रहे हैं, दबा के रख रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं. Don't leave that click. So go here, leave the click. Drag, click. Okay, sir. Put leave. Yes, leave. Click again. Again. Yeah, perfect. Control Shift C. Yeah, Control Shift C. See, Control C is for copying. Control Shift C is copying with a reference point. So it will ask you, what did it say? Specify base point. So go and specify the base point at this girder bearing location. Yeah, perfect. Yeah. Go to your Sophie Plus now. Sophie Plus. Yes. इसको close कीजिए. Control V. What it asks you for is specify insertion point. 0, 0, 0, 0. Enter. Perfect. Now what you can do is you can simply go to your Sophie Plus and see over here by using this key ID, and by doing ID you will be able to click here and it is 0, 0, 0. So our bearing, first bearing of your first girder is at 0, 0, 0. Okay. Now let's move ahead, and what I now do is I go to the top view and I go to structural elements and I go to line elements because I want to create line elements. Go to first tab general, do nothing. Go to second tab beam oblique cable and choose as cross section, and cross section I select mid section, and further I go here in the model space and I say pick lines or curves, and I just start to pick these center lines. ये भी मैं ऐसे मॉडल करूंगा. एक सेकंड सर. सबको सेलेक्ट करना है सारी लाइंस को हाँ, और गर्डर के लाइंस. ना हाँ, बाद में अभी भी कर सकता हूँ मैं करते करते, ऐसे कुछ ये नहीं है. I'm happy doing this. क्या सर? See, now your system definition is done. You need to go for structural elements. हो गया. Go to line. नॉट फाउंड आ जाएगा यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट देख Go to the as cross section. Mid section. और यहाँ पे जाके pick lines और curves. देखो आपका वो फिर से नहीं आ रहा है. ये बंद है ना. चालू किया. बस उल्टा देना है ना. क्या? तो लाइन सोचते हैं. हैंग हो जाता है. मेरे भी हैंग होता है. नेक्स्ट टाइम मैं ट्रांसफर करूंगा. सर 20 पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूं, नॉट फाउंड आ जाता है. आपका स्नैप ऑन है. स्नैप हाँ
वो बात कर दिया हो Snap, select all snaps above. Specify base point but यहाँ पर आपका ये okay, so you copying it from here, right? हाँ पानी ये ऑन करो स्नैप ओपन करो सॉफी प्लस ये thank you sir. दो बार लाया Control V. क्या कहना चाह रहे हैं तुम वो प्रॉपर्टीज करते हैं हम इधर क्या स्ट्रक्चर है लाइन क्लिक कर ऐसा सेक्शन मिड कर अब सेलेक्ट कर ठीक है इस पे जा रहे तो यहाँ पे दो लाइंस two lines are intersecting. Just go and click on a line only first. So, are you sure? I think we need to make time more. So let me know once you are done. okay Done? I look at things in the three-dimensional view and just conceptual ठीक है आ रहा है no problem. तो इसमें भी दिक्कत है मेरे को कि I don't like these 1, 2, 3. I want them to be as end sections and this one. So I go here. I say modify lines, right? So I go. I select this, and this. So there is line और line के सामने यहाँ पे modify properties of one or more structural lines. Click on that. Click on this, and this. Click enter. And further, I say that instead of mid-section, it should be an end section. I say apply. ये देखो ये mid-section का end section बन गया. Clear? Further, I select 1, 2, 3. और मैं बोलता हूँ end to mid चाहिए. I say apply. अच्छा जैसे सुनिए. हाँ? Concept solution.
Yes, yes. करना पड़ेगा उसके बाद ही आगे सेक्शन Yes, 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 yes. So is this good water? This one? कैसे हो जा रहा है? अप्लाई ओके दोनों का करना है या ओके भी करना चलेगा या दोनों भी करते हैं तो इशू If you do apply your कि मैं जैसे ही वो एंड टू वेट कर रहा हूँ ना गायब जा रहा है क्या हुआ? हाँ टेपरिंग वाला भी शायद ब्लैंक आ जाता है हाँ मेरे को देखेगा हमारा क्या हो रहा है क्या हमारे जो डेटा पे जा रहे हैं हाँ तो ये फिक्स है ना अभी भी नहीं आ रहा है फिर से लाइन करके सेव को क्लिक करोगे लाइन वो हमने सीधे सेट दबा दिया अभी असाइन नहीं किया है like start with the end section and with the mid section. Wait. cross section section model. आप लोगों का बैठ गया है go back delete your cross section number 4 शायद आपने वो फिर से मॉडल किया रहेगा उसको फिर से क्लोन करो 3 को और ड्रैग करो 4 नोट पॉइंट्स पर तो आ जाएगा keep it assigned इसको कुछ नहीं करना go back to cross section straight away delete cross section number 4 although that has been assigned here clone cross section number 3 drag your those points and it will start to visualize आपको बस एकदम परफेक्ट है अच्छा आपका ये पेंडिंग है ना आपको क्या करना है ये जो क्रॉस सेक्शन है मिड सेक्शन है ये एंड चाहिए ना आपको लाइन पे जाओ एडिट पे जाओ 1 2 3 वर्ड्स को सिलेक्ट किया मैंने मल्टीपल वर्ड्स को सिलेक्ट करके आप उसके प्रॉपर्टीज चेंज करना चाहते हो एंटर करो कीजिए और मिड का एंड सेक्शन कीजिए ओके किया तो यहाँ पे एंड सेक्शन है now what you do is go to line
go to edit line, select this. Now you would want to have from end section to mid section. Say okay. तो ये हो गया. टेपर्ड दिख रहा है अभी यहाँ पे. ये नॉन टेपर्ड ये end section है, ये टेपर्ड section है, mid section है. Similarly, you need to do it over here as well. Clean. Are you done? No. Yes. No. No. Good. आपको समझे ना आपका क्या हो रहा था? We're clicking on a point. The point has got two lines coming together. So which line to select? So but you click on only one line. And आपको ये चल रहा है. Yes. Escape it. Give it a run. Keep it. Escape. Give it a run. Close it down. Close. Save. See, this is your process there, right? So now you also understand the importance of while code. Okay, let's now what I hope everyone is done with this. So what is going to be our next step is yes, sir. एडिट जाने की काम राइट क्लिक करना पड़ेगा एडिट में जाने की एडिट में जाने की End section की है. Say okay, you're done. End section हो गया नीचे भी. Say okay, हो गया update. इसमें पहले क्लोज होगा. Click on 1, 2, 3, enter. Just make here end section. Make to end जाना है. Yeah. Say okay. You're done. Now what you have to do is you have to model diagrams. So diagram in a line element, and you are going to model it now. So you need to go to the wireframe view and then start modeling. Group number we will assign to this diagram is 2. End diagrams I am saying. So I'll just save my model file. And what I do now is I go to the line here. Should I proceed? हो गया आपका. So let's wait for them. Okay. M space. Sorry. M space. तो मतलब क्या करेगा? नहीं एक बार So this floor is creating some noise. I wish that it's not slab. ऐसा बोल रहे हो क्योंकि I happen to design the slab on which we rested a wall. The slab was already designed and a wall was rested on top of it. And पता नहीं ऐसा क्यों हुआ अभी hidden beam वगैरह कुछ नहीं था. And it did pass well, but as a designer वो मेरे मन में बहुत दिन के लिए ऐसा चल रहा था कि मैं slab के ऊपर वो wall rest कर रहा हूँ. And that may face some problem. Nothing happened. Thank you. नहीं वो पास हो रहा है ना. स्ट्रक्चर वो पास हो रहा है. So यूनिट वेट अगर लिया आपने उस स्लैब का और उस पे जो रेनफोर्समेंट है वहां पे वो अगर वो लोड के लिए चेक किया उस पे जितना लोड आने वाला है इट पासेस. बट आई डोंट नो व्हाई वो थोड़ा मेरे वहां पे कोई ऑप्शन नहीं था हमें. We had to take the wall inside, reason being because high-rise building and अगर वो वाला बाहर लेंगे extension का तो पूरा scaffolding करना पड़ता है नीचे से ऊपर तक. Wanted to avoid that and we did that. मतलब मटेरियल का कॉम्प्लीकेट था. नहीं वो उसका सेल वेट 3 किलोन्यूटन पर मीटर था. ज्यादा नहीं था. Very less सेल वेट. बट उसमें आ रहा था लोड मतलब 9 किलोन्यूटन पर मीटर का लोडिंग था वहां पे.
but nothing happened to it. और अब तक तो काफी सही चल रहा है. But the slab passed in all senses. Deflection में पास होता था. Every sense it passed. मैं उसका finite elements चेक किया, उसमें भी पास होता था. It passed everywhere. और काफी अच्छे से मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा के वो सब करके पास होता था. लेकिन फिर भी मतलब वो ऐसा चलते रहता है ना थोड़ा. और होता क्या है कि when it comes to design as per IS 456, वो जो bending moment देता है अपने को sagging वाला, that is for your mid span region. Place किया था wall वो that was पहले इसका 2 देखो. feet from the beam elements adjacent beams. It was not at the mid span. ये भी चीज है वहाँ पे. कम हो जाएगा इसका हाँ मतलब कुछ वो तो मतलब सीधा मतलब मैं बोलूंगा वो तो इतना स्टिफ था कि वो सीधा बीम पे लोड ट्रांसफर हो रहा था. मैं ऐसा एज्यूम करके चलता हूँ. सर मेरा अभी भी वो सेम कर रहा हूँ मैं. फिर हम आगे बढ़े या नहीं बढ़े. ठीक है, बढ़िया. नहीं ऐसा नहीं एक है. बार भी उसको मैं सेक्शन भी दे दो. ठीक है. ठीक है. और होता क्या है कि when there is a slab and you have got some length of slab, तो उसका जो effective width है at the mid span, उसको more than 1 meter मिलता है. It's not 1 meter. अगर calculate अगर किया तो मतलब it has got enough strength. I always say that. So that has been my experience. Going to the line and group 2 beam oblique cable as cross section 400 by 1000 mm. I repeat, I go to structural elements. I go to line. General. Group number में change करता हूँ to 2. I go to next tab. Beam oblique cable. Element type. I say as cross section. Okay. Go here and do escape. Escape. ये सेंटर पे नहीं खा रहा है कुछ. ये देखिए. किस वजह से हो रहा है? एक बार हाइड किया ना नेक्स्ट टाइम बोलेंगे तो वैसे हो गया. तो अगर आपको खोलना है तो आपको उसके ऊपर उसके साइड में खुद जाता है विदाउट क्लिकिंग. ठीक है. So I go to line now. General group number is 2. Beam oblique cable as cross section. I go here to cross sections and I go to sorry this one 400 by 1000 mm. Model space here and I start from this end and go up to this end. ठीक है. ये सेक्शन नहीं आ रहा. That's cross section. Okay. 400 by 1000. Simply go here from this corner to this node to this node. Now you want to model the next one. Okay, यहाँ पे but वो continuity जो ले रहा है उसको break करने के लिए you can simply go with single element mode. You model from this place to this place.
I do it here as well. क्या होता है कि अगर मैं को अभी लास्ट में जाके मॉडल करना है यहाँ पे, लेकिन क्या करता है कंटिन्यूटी कर रहा है ना ये जो लाइन जो आ रहा है एक्स्ट्रा, मतलब वहां से फिर से चालू होता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए यू कॉल इट सिंगल एलिमेंट मोड हियर। इसको अगर किया तो वो छोड़ देगा उसको, और आप नेक्स्ट एलिमेंट को यहाँ से चालू कर सकते हैं। यहाँ का जो मिड डायफ्राम, उसको भी मैं यहाँ से मॉडल करता हूँ, उसको मैं ग्रुप नंबर 2 रखता हूँ, बस मैं उसका कर देता हूँ। इसके प्लान सीधा करना है। क्या करना है आपको, कुछ के सीधा नोड टू नोड मॉडल करना है, कुछ नहीं करना है आपको, नोड पे जाओ सीधा, या मत किया तुम क्लियर अंदर से अंदर। नहीं अभी नहीं हुआ। हम दोनों बोथ एंड और इंटरमीडिएट ग्रुप 2 में। ग्रुप 2 का मतलब क्या है? ग्रुप 1 मतलब ग्रुप 1 में पूरा स्टेट के आगे ग्रुप 1 डायग्राम आ गई। गटर से डायफ्राम से आपको देखने में बाद में कंस्ट्रक्शन स्टेज में आसान नहीं हो जाएगी, कंस्ट्रक्शन स्टेज में काम आएगा। तीन कंस्ट्रक्शन फिर तो 3 ग्रुप होने चाहिए थे। टैग का अलग होना चाहिए था, गटर का अलग होना चाहिए था, डायफ्राम का अलग होना चाहिए था, या टैग और डायफ्राम का साथ होना चाहिए था, गटर का अलग होना चाहिए था। कर है ना, टैग का भी अलग ग्रुप कर दें। टैग तो अलग ही कंस्ट्रक्शन होगा, गटर अलग रखेंगे, उसका अलग ग्रुप में 2-3 ऐड करता हूं। ऐड कर सकते हैं। बस विजुअलाइजेशन के लिए कुछ आपको सिर्फ टैग के रिजल्ट देखना है तो आप ग्रुप 11 को देख, सिर्फ डायफ्राम के देखना है तो ग्रुप 2 के देखूंगा, बाकी सारा ठीक है, स्विच ऑफ कर दूं। क्रॉस सेक्शन ग्रुप 2 तो है। अभी कैसे सेलेक्ट करना है? पिक लाइन करके करना है क्या? ये नीचे क्या करना है? नीचे कुछ नहीं करना। तो सॉफिस्टिक का मेन ऑफिस पुणे में, नहीं दिल्ली में नहीं यार, आपको यहाँ पे कोई नहीं, मतलब कुछ बताने वाला है ट्रेनिंग देने वाला। लेकिन यहाँ पे साहब लोग हैं, आप थोड़ी ट्रेनिंग अभी तक यार कंपनी इतना कैसे निकल वो मैंने पूरा कितना वो कर दिया। रजिस्टर हुआ है वो। नहीं आपको कितना हुआ? मैं सॉफिस्टिक यूज करते हुए मेरे को सॉफिस्टिक तो 18 से यूज कर रहा हूँ, मतलब होगा 6 साल हो। मैं सॉफिस्टिक यूजर हूँ। तो ये ट्रेनिंग देते हैं डिजाइन भी करते हैं आप? मतलब डांस भी करता हूँ, वही इंटरेस्ट है रहा डिजाइन डिजाइन करो, थोड़ा हाई फंडा एनालिसिस करो, सॉइल स्ट्रक्चर एनालिसिस करो। स्ट्रक्चर लॉ कौन यूज कर रहा है यहाँ पर? सॉफिस्टिक का कोई और यूज कर रहा है?
वो टेक्नोलॉजी फोर्स कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग यूज करते हैं, अरे सारे लोग, तो ऐसा नहीं कि भाई जैसे स्पेक्ट्रम फोर्स करेगा, हर एक के पास सोफिस्टिक का लाइसेंस। मुंबई में तो अभी भी 15-20 कंपनी। ऐसा है कि इंडिया में फिर भी कम है, यूरोप में जैसे यहाँ पे लोग खुद होते हैं, ये लोग सॉफ्टवेयर को दे रिलेटेड ग्रास वगैरह कर रहे हैं, काफी पच्चीस इंटेल इससे बड़ा कोई यूज करते हैं, तो सॉफ्टवेयर बनाओगे ऑप्टिमाइजेशन वगैरह काफी अच्छे रिजल्ट्स वगैरह आते हैं, बहुत सारी चीजें, इट्स एन ऑप्शन नो डाउट, लेकिन ऐसा बहुत डिफिकल्ट है, मतलब इतना भी करेंगे तो फिर भी मतलब सब लेकिन ये मैंने देखा था कि लोग जो है पहले स्टैंड लोअर ग्राफिक यूज किया, फिर लोग मिडास में आए, फिर मिडास में बहुत कम टाइम तक लोग स्टे किए लोगों ने, फिर सीधे अच्छे से बताइएगा कि सब लोग जो है सॉफिस्टिक यूज कर रहे हैं, तो मिडास में और जो आपका जो है कि इसमें सॉफिस्टिक में बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस है। ग्रास इज ग्राफिक यूजर इंटरफेस, ठीक है, वेरी इजी टू यूज वाली चीज है, लर्निंग कर्व आपका बहुत ही छोटा है, तो बस सीख के तुम कर सकते हो। सॉफिस्टिक का है कि अगर लर्निंग कर्व थोड़ा बड़ा है, बट आपका जहाँ रिपीटेड चीजें हैं वहाँ पे बहुत अच्छे है, तब साथ आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे देगा कि सॉफ्टवेयर के अंदर ही आप कुछ चीजें चेंज कर लो, मॉडिफाई कर लो। तो पहले लोग लोगों को चाहिए था, पहले स्टार्ट से ही सब सारे फिर धीरे धीरे होता है कि बैलेंस नीड बढ़ती है, तो कैसे नेक्स्ट स्टेप सारे डन विद दैट हो गया आपका। So what you now next need to do is you need to model your supports, right? So let's model supports, which is a point element. So I select pxx, pyy, pzz. Also I select mx. And I still click on the varying locations. नहीं, मैं ऐसा नहीं करता, मैं एक ही मॉडल करता हूँ फिलहाल, एक को ही मैंने मॉडल किया है, and that I'll model it at first varying location 0,0 पे, यहाँ पे ये वाला, okay. And now where I just enter and 1.45 meters down. सपोर्ट बंद कर, हाँ, सपोर्ट कंडीशंस क्या कहते हैं? यहाँ पे मैं पिन सपोर्ट मॉडल करना चाहता हूँ ना, तो इट इज px, py, pz and mx, और मैं उनको रिजिड लिंक से कनेक्ट करता हूँ यहाँ से हम। इसमें क्लिक करना, लिस्ट करना तो क्लिक करना पड़ेगा। तब मान लीजिए कि किसी को इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें जैसे मान लीजिए इसको रिलीज करना है या किसी को फिक्स करना है, रिस्ट्रेन करना है तो आपको क्लिक करना है। रजिस्टर करना है, क्लिक करना है, फिक्स करना है, वो करना है। हाँ, तो मोमेंट सारे जो है कि उसको जो है कि छोड़ देते हैं, मतलब अगर रिस्ट्रिक्ट करना है तो क्लिक करना पड़ेगा, राइट? यस यस, ग्लोबल करना है, ग्लोबल करना है, लोकल कीजिए, ग्लोबल भी कीजिए, क्या स्ट्रेट तो कर सकते हैं। वो इसको ग्रुप नहीं आता ही नहीं उसको। अच्छा, ग्रुप आता है, गुड, हम इसको ग्रुप डालते, ग्रुप 0 डालते ग्रुप 0। थैंक यू। मेरे में तो नहीं नहीं यार, मेरे में तो नहीं आ रहा है, हमारे आपके इसमें आ रहा है। हमारे इसमें एंड में जाओ,
जनरल में सही है, आपका लैपटॉप मैंने देखे जाना चाहिए। नहीं, आप सपोर्ट कंडीशन में गए हो, आपने क्या किस पर क्लिक किया है? Okay, he is into structural line. देखो आप यहाँ पे structural line में हो, तो you have to go there. Not on the lines, you have to go to point, you have to go to support conditions, px, py, pz, mx. ठीक है, अब मैंने इसको select किया and enter किया. Make sure that when you are moving it down by 1.45 meters, you have got ortho on so that you shift it only vertically downwards. पॉइंट का सेक्शन और पे आया है, इसको ग्रुप डाला था कुछ। नहीं, zero रखें, no group. So what I now do is I select this point constraint and this support and say CO enter, that is copy. And also I copy at the other end. And I double click on support and I say PX. Release करना है ना? अगर मान लो मैंने इसी को कॉपी कर दिया इस साइड, तीनों को एक बार में सेलेक्ट करके मॉडिफाई किया कर सकते हैं, तो तीनों को सेलेक्ट कर लिया था, फिर अब क्या, एंटर। हाँ, enter, modify. यानी ये तीन सपोर्ट है, तीनों को रिलीज करना है, सही है, तीनों को परमिशन करके रिलीज कर सकते हैं. कैसे क्या देखो मैं करता हूँ. अभी इसी को कॉपी करो, सेलेक्ट करना है this हाँ, Hit. अच्छा, अच्छा कंस्ट्रेंट करना इसको और इसको एंटर, बस इसको ये छोड़ दो. लेकिन मैंने तो एक को कर दिया मैंने, फिर उसको कॉपी कर दो. ओके, मैं मिस करता हूँ point constraint. Go from here to here. तो मिलान में करना है, जो बहुत ही जो इस तरह से आई में डालने पड़ेगी लिंक वीडियो से मैं डाल के दूंगा. मैं देखता हूं कि कुछ है कि बैलेंस में इंसर्ट करनी पड़ती है उसमें. अभी मैं देखिए 606 सेलेक्ट कर हाँ Okay, so we have modular supports as well. Need to do is we need to model our, what is pending? Can you please tell me? Slab. Yeah, the slab. लेकिन ये जो हमने सपोर्ट किया है ये गटर के लिए इसमें नहीं है, सेंटर में. अच्छा ऐसा है क्या? हाँ, वो कर्वेचर में ना, इसलिए
तो आप इसको सिलेक्ट करो, एम एंटर, इसको पकड़ो, इधर लाओ, इससे इसको पकड़ो, एम एंटर, मतलब वो करेगी। ये सर एस के बस ठीक है, वी आर डन विद दिस। So what we further do is We will for element, which is area element. So I click on that, general, and thickness I need to verify from my AutoCAD sheet. पहले तो उसमें thickness भी देंगे, मैं बहुत दिन बात कर रहा हूँ। थर्टी है, 48 to 30 है क्या, ठीक है। So I go to here to 30 mm thick, group number I give 11, group number is 11, for area element thickness is 230 mm, nothing. एस्केप करो, यहाँ पे जो एरिया 230, group number is 11, material is M35 grade concrete but not zero sulfate. नहीं नहीं, उधर फ्लांज का जीरो लिया ना, तो इसमें ले रहे इसलिए उधर नहीं ले रहे, इसमें लेते तो इसमें नहीं लेते फिर। ऐसा है कि गर्डर पे स्लैब पास हो तो गर्डर के सेलफेट के कारण स्ट्रेसेस होगा, स्लैब के सेलफेट के कारण स्ट्रेस गर्डर पे आए। ठीक है, ये तरीका है। स्लैब के मतलब ग्रीन कंक्रीट की वजह से जो भी स्ट्रेस रहेगा उसमें गर्डर में लगेगा, उसको लगाओगे फिर डीएक्टिवेट कर दोगे सर। हाँ, ये किस में तो आपको क्या है कि आपको एक्टिवेट करना है उसको, स्लैब को। जब तक आपका स्लैब एक्टिवेटेड नहीं है तब तक आपका तो गर्डर का सेल्फ वेट है सिर्फ, कंपोजिट एक्शन भी नहीं। जब स्लैब जब आ जाएगा तब तक आपका कंपोजिट एक्शन एक्टिवेट नहीं करेंगे आप, तो सिर्फ ये स्लैब का सेल्फ वेट है इसके ऊपर, विदाउट कंपोजिट एक्शन। कंपोजिट एक्शन आप अगले वाले स्टेप में ऐड करोगे। जीरो किया तो मतलब जो कंप्यूटर प्रॉपर्टी आएगी ये कंप्यूटर गाइड प्रॉपर्टी आएगी इसमें। जैसे कि जब मैंने असाइन कर रहा हूं, टू थिंग्स डिफरेंट, सेल्फ वेट ऑफ ग्रीन कंक्रीट, ओके। वो क्या है कि अगर हम स्लैब को भी मॉडल कर रहे हैं और ऊपर वाला वो गर्डर के ऊपर भी एक फ्लांज एलिमेंट मॉडल कर रहे हैं, अगर मैं उसका सेल्फ वेट जीरो नहीं करता हूँ और इसका भी सेल्फ वेट जीरो नहीं करता हूँ तो वो 2 बार गिना जाएगा। वो एक ही बार गिनना चाहिए, इसलिए मैंने वहां पे वो सेल्फ वेट को जीरो किया था फ्लांज सेक्शन का। दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग, व्हेन इट कम्स टू द कंपोजिट एक्शन, तो कंपोजिट एक्शन ऐसे कि जब मेरा ग्रीन कंक्रीट जब हार्डन हो जाएगा तभी वो मतलब मेरा इफेक्टिव वेट लेगा फ्लांज का। तो इसलिए मैं इसको ऐसे कंस्ट्रक्शन स्टेजेस में एक्टिवेट कर रहा हूँ कि सिर्फ गर्डर है और ऊपर मेरा स्लैब आ रहा है। नहीं गर्डर है, मेरा स्लैब आ रहा है, स्लैब का वेट मेरा जीरो है। मेरा स्लैब का वेट जीरो नहीं, डैश जीरो है, डैश जीरो नहीं मेरे स्लैब के लिए नहीं ना, हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। अच्छा, दो ग्रुप किया है, ग्रुप 1 ग्रुप 2। तो जब पहला ग्रुप किया है तो पहले ग्रुप में गर्डर आपने चूज किया है अपर बॉन्ड कंडीशन में, दूसरे ग्रुप में आपने स्लैब चूज किया है बॉन्ड कंडीशन में, लेकिन उसमें जो आपने चूज किया है वो चूज किया है सेल्फ वेट डेंसिटी जीरो वाला, सेल्फ वेट जीरो वाला, वो सिलेक्ट किया है आपने जो है ऊपर वाला, ऊपर वाला। सही है। जब आपने ऊपर चूज किया है तो मतलब उसका वेट नहीं है, वेट नहीं, लेकिन थिकनेस है। स्टिफनेस है इसकी, हाँ, स्टिफनेस रहेगी इसकी। स्टिफनेस रहेगी लेकिन उसका वेट कुछ नहीं रहेगा उसका। अच्छा, वो कौन सी कंडीशन में आएगा? मुझे लगता है जब ये कंस्ट्रक्शन स्टेज में जाएंगे तो वो नहीं अभी भी जैसे क्योंकि अगर मान लीजिए हमारा केस क्या बनेगा कि हमारा केस गर्डर है स्लैब नहीं है, उसमें केवल डेड वेट आएगा, उसमें केवल इनकॉम्प्लीट का, उसके बाद हमारा
वो भी अगर ये भी एक्टिव हो तब कंबाइंड प्रॉपर्टीज आएगी, तो एक क्लियरिटी उस पर बनेगी। तो वो भी एक्टिव तब कैसे करेंगे हम? कैसे करेंगे? कंस्ट्रक्शन फेलियर पर 100 ये है कि मेरे पास ये बड़ा नहीं है और उसके साथ ऊपर ऐसा नहीं है। मैं 95 ऐसा रखूंगा, लेकिन 5 नहीं है, ऊपर सिर्फ स्लैब का सेपरेट है। मतलब मेरा कंपोजिट एक्शन यहाँ पे आ रहा है, लेकिन मेरा यहाँ पे फिर सेपरेट है। अब क्या हो रहा है, अगर मैं 95 में अगर मैं टेक्स्ट लिख रही वाला अगर एक्टिव करता हूँ यहाँ पे, तो क्या मेरे टेक्स्ट लोग का भी यहाँ आ रहा है और सिर्फ ये गड़बड़ पे जा रहा है नीचे, उसमें कंपोजिट एक्शन नहीं है। मतलब दिस इज अ केस ऑफ कास्टिंग, नो कंपोजिट एक्शन। Here is case of after casting. और यहाँ पे आएगा कंपोजिट एक्शन। कंपोजिट मतलब क्या मेरा इफेक्टिविटी लग रहा है प्लांस का। ये कंपोजिट एक्शन किसी विदाउट कंपोजिट ये आएगा अगर पे मेरा स्लैब का सेल पर जा रहा है। नहीं डेंसिटी जीरो का कौन से केस में गिरेगा? यहाँ पे जीरो, इसका डेंसिटी जीरो। ये जो सिर्फ इतना जो पोर्शन है इसका डेंसिटी जीरो है। लेकिन जब कंपोजिट एक्शन आ जाएगा तो तब तो डायरेक्ट इसमें उसका वेट आ ही जाएगा। वो ऊपर ही आता है। अच्छा ऊपर ले वेट तो कंपोजिट एक्शन आने के पहले आता है। ओके ये तो यहाँ पे आ ही रहे हैं, इसका नहीं जीरो, इसको यूनिट वेट है मैंने 25 तो भी तो मेरा वेट यहाँ पे आ रहा है, तो मेरा ये आई सेक्शन है। जब मेरा ये कंपोजिट सेक्शन जब हो रहा है तो थिकनेस बढ़ रहा है, उसका वेट तो ऑलरेडी आ चुका है यूनिट में। डबल वेट नहीं आएगा। क्लियर 230 था ना सर थिकनेस। और M35 ग्रेड बैटरी में नेगेटिव लोकल जेट उसमें भी ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि वो क्या है कि देखो ये जो बना रहा हूँ उसको देखिए बना रहा हूँ इफेक्टिविटी कैलकुलेट करके। ठीक नाम में अगर जाके मेरे टेक्स्ट लाइन देखोगे तो ऐसा कुछ कैप्चर करना है कर्वेचर वगैरह वो चीज का, मतलब ऐसे नहीं कि यहाँ पे मेरा इफेक्टिविटी इतना ही रहेगा। तो अगर मैं रिवर्स करता, अगर मैं इसको इसको जीरो यूनिट पे जीरो डेंसिटी बनाता और इसको यूनिट पे रखता तो वो मेरा एरर आता, मतलब दैट विल बी एरर इन द नोड इंटरप्रिटेशन। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जाके पॉइंट एरिया का ऑप्शन सिलेक्ट करूँ और ये जो है मैं यहाँ पे बाहर एक ऑलरेडी बना के रखा है, मैं उसको जाके पॉइंटिंग एरिया करता सेंटर पे क्लिक करना है। हूँ। नहीं नहीं कहीं लोग क्लिक कर इसमें एक अप्रोक्सीमेशन रह गया ना, मिड सेक्शन वालों ने इफेक्टिव वो में यूनिफॉर्म लिया है, बट अगर आप थोड़ा वो वेरी करेक्ट नोड एक्चुअली लिया क्रॉस सेक्शन और अप्रोक्सीमेशन करता है उसमें भी अगर आप कम रखते हो क्या करना चाहिए आइडियली कि ये तीनों को अलग अलग देना चाहिए। उसको भी कुछ पैरामीट्रिक कुछ इनपुट डाला जा सकता है क्या? I'll speak about this. How can that be exactly taken as per the geometry? तो मैं करता हूँ इसको M enter, that is move command, और मैं इसको मूव करता हूँ ऑर्थोगोनल
ऑर्थो ऑन रखिए प्लीज बाय 20 मीटर्स। इसके ऊपर आके बैठ जाए, मुआयदे नहीं होते। फिर यहाँ पर कितना करना है? 20 मीटर्स। तो होता क्या है कि अगर मैं इसको यहाँ पे जाके देखूं लेफ्ट व्यू में, दिस इज माय आई गर्डर और उसके ऊपर इसका फ्लांज भी है, ये दिख रहा है, उसका फ्लांज भी है यहाँ पे ऊपर। सो दिस इज आई गर्डर एंड द फ्लांज, राइट। और फ्लांज के ऊपर जो ओवरलैप हो रहा है वो मेरा डेक स्लैब है। अगर मैं डेक स्लैब का डबल क्लिक करके पॉजिटिव लोकल जेड करता और अप्लाई करता तो it is modeled at that junction between the flange and the girder top. If I change its orientation to negative local z, that means it would go down. वो ऊपर वाला हमने किया था तो वो ऊपर गया, नेगेटिव ऊपर बढ़ जा रहा है हाँ। और पॉजिटिव आई नीचे मतलब और सेंटर करते तो सेंटर पे रहेगा। अभी हमारा केस, हाँ सॉरी, नेगेटिव लोकल जेड, नेगेटिव अगर मैं सेंटर पे जाके रखता हूँ इसको सेंट्रिक, तो ये सेंट्रिक हो जाए। मेरे को ये चाहिए तो मैं इसको जाके ये रख रहा हूँ, ठीक है। तो ऑफसेट देने के लिए ऑफसेट करेंगे। स्लैब को आपने रखा था गटर के टॉप पे, स्लैब पे नहीं, हमारा एंटायर जो मॉडल है 2D वायर फ्रेम का, वो सारा ये लेवल पे है कि इट इज एट जंक्शन बिटवीन दी गटर टॉप पे। तो नेगेटिव रेट से क्या होगा, अगर सेंटर रख देते तो स्लैब वहां सेंटर पे होगा, नेगेटिव रेट किया है तो बटन का बटन आते हैं, स्लैब का बटन। ठीक है। और जो स्लैब का जो रेफरेंस पॉइंट है, बॉटम वाला पॉइंट है, टॉप पॉइंट है, जैसे कि रेफरेंस जैसे है ना, ये केस में वो बॉटम वाला पॉइंट अभी ऊपर जा रहा है ना, स्लैब बॉटम वाला। आपने डिफाइन नहीं किया, नहीं जो गाइड तो डिफाइन किया था नेगेटिव रेट किया तो नेगेटिव लोग। So I think your this geometry is done. और कुछ पेंडिंग है इसमें? I don't think so. Yeah. What we will do is go to loads. Go to load case manager. Load cases. A new load case which title cell weight, that is SW. Factor of dead weight is 1. And I simply say okay. बस मैंने एक सेल वेट का केस मॉडल किया है, nothing else. So I went to loads, I went to load case manager, I went to load cases. Title is SW, action is G underscore 1, factor of dead weight is 1. इसके अलावा मैं कुछ नहीं किया, मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ। एक लोड केस को मैंने मॉडल किया सेल वेट को और एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। I go to SSD and I see that my geometry is something like this, which is meshed automatically, right? I have got diaphragms, I have got deck slab, I have got supports. I go to linear analysis, do right click and I say calculate linear analysis. I want to calculate the self weight case. It works. So that means it is my, it's my stable system, that is what I can say. Just my verification. और there is also command called test, जिसमें जाके तुम्हारा structure stable है, unstable है, वो एक बार check कर सकते हो। Before going ahead, I just have got a confirmation that I have got a stable system, nothing else.
I can model any load on top of this and that will work well. मान लीजिए कि आप कर्वेचर में है, इसमें कर्वेचर तो काफी कम है। एक बार क्या होता है कि हमको स्टेबिलिटी भी चेक करनी पड़ती है, ठीक है? तो स्टेबिलिटी चेक करने के लिए इसमें क्या कर सकते हैं? आप जैसा कर्वेचर है वैसा मॉडल कीजिए और फिर उसमें रिएक्शंस चेक कीजिए उसको। रिएक्शन तो बेसिकली क्या है कि लाइव चलते उसमें चेक करना पड़ेगा, लाइव भी चलते जो है। ऐसा है ना, टेंशन कहाँ पे आ रहा है? ऑपरेटिंग के लिए मोमेंट चेक करते हैं। ठीक है ना सर, दोनों भी एक ही है ना। अगर मोमेंट अगर देख तो मोमेंट भी देख सकते हो उसमें। रिएक्शन का कहना क्या है मेरे को? रिएक्शन इनटू लीवर आर्म इज अ मोमेंट, नथिंग एल्स। You said either you see this or that. इसमें क्या है? अपना क्या है? सुजीत सुजीत इसमें क्या है कि एक्शन में जाएंगे। सही है, you are right. Go to load cases please. Go to load cases. Yeah. ठीक है, नो प्रॉब्लम। और बस इधर डेड वेट का फैक्टर 1 डाली है, 1। ओके से ओके, नीचे 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 चीज ओके। एक्सपोर्ट द मॉडल से ओके, एक्सपोर्ट द मॉडल अपने लोग ऐसा क्यों किया? लोड पे डाल के बोलता हूँ। यहाँ या एक्सपोर्ट सेकंड हेलो से ओके। क्या बोल रहे हैं? partially connected with the model structure 916. Okay. Please go to your HSD. So you have got your model here. Go to your linear analysis, double click on your linear analysis. नीचे calculations, linear analysis. Double click on that. यहाँ पे this double click. So okay. So congratulations, you're through. So go to home. Go to home, please. Here, the top. Go to this system. So go to locus 1. This is what you see. So your system is stable. Your model, your stable means I am saying stability point of view that means the API के लिए जो determinate system है. Not determinate, so the stable system. अगर मतलब आप अगर सपोर्ट स्टिक से मॉडल नहीं करते, कुछ आपका एक अदर नोड्स यहाँ पे वहाँ पे कनेक्टेड नहीं है, तो लो ट्रांसफर में वो टाइप पे इंस्टेबिलिटी एरर नहीं है, ऐसा बाकी कुछ नहीं। ठीक है, clear to everyone? Everyone is here, right? Okay. Now what we need to do is we need to model further our load cases. Okay. So we go to Sophie Plus. So we have modeled our geometry. Geometry is done. So by now I think you can model any kind of geometry. मॉडल वो पहले ड्राइंग मंगवाओ, लाओ। यहाँ पे तो गिनना भी नहीं, मैं अब तक पता नहीं उसका गटर का लेंथ क्या है। तो ऑलरेडी मॉडल रेफरेंस में तो है ही ना, वो एग्जैक्ट लेंथ है हमारे पास। या सो दिमाग कर्वेचर स्लैब के अंदर जो है, तो इसमें क्या है कि एंड गार्डन का स्लैब का कंप्लीट आएगा, बीच में ज्यादा आएगा, ऑटोमेटिकली बराबर एग्जैक्टली लेगा, एग्जैक्ट जैसा मॉडल किया। अगर दो गर्डर के बीच में ऑप्टिमल डिस्टेंस है, so that will be as per जैसा स्टिफनेस है, प्रोपोर्शनेट स्टिफनेस के हिसाब से देगा।
Thickness of the system. Go into modeling of our load cases. Yeah. Stress भी model करना है हमें. But let's have a look into the load cases first, then go for this to stress. So I go to load case manager and I go to the action and I'm okay with all the actions that currently are there. I create one more action, say new, and it is for my temperature loading. And I simply say okay. Sure. लोड मैनेजर इसी में एस्टीमेट Yes, sir. लोड मैनेजर एस्टीमेट Sophie plus. टॉप में लोड का जो टैब है ना सर वहाँ पे. Not required as such. ऐसा कुछ ही नहीं. मैं तो यहाँ पे इसको कुछ नहीं करूँगा. जो पहला था ना वही करते हैं. So T is the temperature load case. That is all. Nothing else. नहीं आपको इसमें से बाहर जाना पड़ेगा. Close it. Go to wire first. Conceptual. Go to the third tab of loads. Third tab is loads. Third tab. Load case manager. And go to actions. Define one action that is temperature T. न्यू केस में जाएगा Actions में जाएगा. Action में. Action. T है action आपके पास. T action है. टेम्परेचर के लिए एक्शन है आपके पास. अच्छा ये देख अभी यहाँ पे थोड़ा actions and you need to define new action. Temperature T. थोड़ा Okay. Go to load cases now. Now I go to the load cases and I start to include cell bed cases already there. Okay. So instead of this cell bed, I just add this CP as per this going as per this what tutorial. And action I say none. And factor for dead weight at 0. Action is none. I just copy it down and is with concrete. आगे वाला नहीं यार Hmm? ये सही नॉट वन टू नहीं है ठेकेदारों वाला काम है ना कोई नहीं किया है
आपका कोड अलग है ना, इसलिए ज्यादा नहीं। अरे बेटा जीरो जीरो डालना है। बोल दो सर। So you see that actions are none for crash barrier, wearing coat, wet concrete, and pre-stress. Pre-stress बता देता हूँ। Yes. So if you are activating something in the construction stages, then those actions are defined over there in stages. So first you define them as none. Later on you define them in construction stages. Temperature loads are not activated in construction stages, so you here you got that action. That is all, nothing else. So here you see that there is load case number 3, which says wet concrete. It means that this user, okay, someone who developed this tutorial, is going to model wet concrete as an external line load on top of his others. You get what I'm saying? वो केस में ऐसा कर सकते हैं, ये माइडस यूजर ने बनाया हुआ है, तो ओल्ड माइडस यूजर वन सपोर्ट है, तो उनका वो वैसा है, you don't need to do it every time, it will fall. क्या आपको मैं एक तो मैं बताऊं कौन सी सॉफिस्टिक वाला जो डॉक्यूमेंट वही कोई जरूरत लोड केस रहने दो, हम उसको यूज नहीं करेंगे कंस्ट्रक्शन के। नहीं ये तो मैं तो पहली बार इसमें से जा रहा हूँ अभी रिव्यू भी हो जाए, अच्छे रेफरेंस भी है, और सर ने इतना प्रिंट करके लाया तो उसका फायदा ही हो। ठीक है, मेरे भी फैक्टर नहीं डाल पा रहा हूँ, सही नहीं हो पा रहा। कौन से ये उसको तो हम हाथ ही नहीं लगा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हो, उसको देख भी नहीं रहे। कोड चेंजेस लिए नहीं आएगा। नहीं हम इसमें भी उसको कुछ नहीं कर रहे, ये जो फैक्टर्स है ये अपने कोड में क्या है, ये जो साइड नॉट साइड साइड इधर हम दे रहे हैं एप्सिलॉन 1 2, इधर हम दे रहे हैं EC2, ये सॉफिस्टिक का ये कि दैट इज डायरेक्टिंग लाइन विद EC, that's why we are not going to anyway use this for our further combinations and all, that's why I just ignore it. Okay, so I simply say okay and my load cases are modeled. अच्छा मैं अभी एंडी करता हूँ इसको, खाली सेलेक्ट। So now further what I do is I start to model these load cases wherein I assign element loads, first temperature load this है, and I go to line loads, sorry here loads, and I go to element loads, that is line load, and I just drag it like this and it selects all lines only. पूरे को सिलेक्ट कर दो, वो बस लाइंस को सिलेक्ट करेगा, फिर ये लाइन लोड है ना अभी, वो बस लाइंस को आइडेंटिफाई करेगा। And you say enter, and in that case you select load case number 5 and the value is 15, and you simply say okay, क्या है degree Celsius कर लो। So the class is temperature, it goes to degree Celsius, नहीं ले रहा है, लाइन रोड अटेंड किया मैं सिलेक्ट करो सबको, line load select करो सबको,
टेम्परेचर लोड पॉजिटिव, क्लास चेंज कीजिए टू टेम्परेचर टू 15, ओके, सिंपली से ओके लग गया, देखो डी 15 तक, ठीक है, तो ऐसे ओके, एंड दैट 15 is applied that you see everywhere, okay. Negative temperature loading, again going back to element load, line load, I simply drag to select everything, and I select load case number 6, temperature negative, and I go to class as temperature, and the value is minus 10 degrees Celsius, and I simply say okay. राइट, डन टेम्परेचर लोडिंग। अगर फ्री लोडिंग करते तो बहुत सारे लाइंस वगैरह सिलेक्ट करने पड़ते। लगाएंगे हम। वेयरिंग कोर्स करेंगे अभी हम, डिफाइन वैल्यू चेंज कर देना, -15 कर देना, -10। Varying course now, so we go to element loads, we go to area load, ये हमारा, इसके ऊपर जाके मैं सिलेक्ट करूंगा, एंटर करूंगा और उसको लोड के सिलेक्ट करूंगा 2, नहीं ये एरिया को ऐसे इधर नहीं तो कोई भी पेरिफेरी पे जाके किया तो चलेगा। 1.43 kilonewton per meter square, and I simply say okay. नहीं समझे नहीं क्या? 500 का उस जगह पे आपको बेट अगलो नहीं दिखाना कोई तो उसको नहीं। अच्छा ऐसा, ठीक है आप उसी फ्लो में चलो, नहीं जस्ट ये बता दो कि तो क्या ठीक है, मैं बोलता हूँ ना मैं क्या करना है वो केस में। तो जैसा हमने कल 2-3 एलिमेंट्स बनाए थे, मैंने तो डू दैट, और आप क्या करो, नेगेटिव लोड भी लगा सकते हैं लोकली उतने लोकेशन यूजिंग फ्री लाइन लोड्स। लाइंस अगर है आपके पास इधर इधर, नेगेटिव लोडिंग कर दो। इसमें भी दोबारा सिलेक्ट करना पड़ेगा एरिया लोड सिलेक्ट। एंटर सबको किया तो फिर सिर्फ एरिया सिलेक्ट हो जाता आपका। वेयरिंग फोर्स 1.43 डायरेक्शन कहीं पे ये दिया हुआ है। So you see over here that area load is applied, okay? फिर इसके बाद क्या आएगा, वेयरिंग कोड के बाद क्रैश बैरियर लोड। Crash barrier load is a line load, and let's model it as a free line load. Free line load, मैं उसको CB बोलता हूँ क्रैश बैरियर, और उसका जो इंटेंसिटी है that I keep it as 10 kilonewton per meter, and I select this line. So pick lines or curves. So I select this line. ये देखो ये 2D लाइन है, तो दो बार मेरे को सिलेक्ट करना पड़ रहा है। And this line for crash barrier, ऐसा मैंने क्रैश बैरियर का लोड मैंने मॉडल कर दिया, ठीक है। दोबारा सिलेक्ट करना पड़ेगा ना इसमें लाइन लोड जाने के पहले अपनी मेंबर का दोबारा सिलेक्ट करना पड़ेगा ना। समझ रहे हैं? अच्छा लाइन लोड लगाना है, कैसे लोड लगाना है? अच्छा आप फ्री लाइन लोड लगा रहे हैं, एलिमेंट लाइन लोड नहीं लगा रहे। फ्री लाइन लोड, एलिमेंट लाइन लोड ये है, फ्री लाइन लोड ये है, फ्री लाइन लोड इसमें, इसको सिलेक्ट किया आपने,
Edge barrier, pick lines of curve, इस लाइन को सिलेक्ट किया। ऑटोमेटिक लाइन है सर ये। एलिमेंट लाइन लोड होता है तो बस और बस स्ट्रक्चरल लाइन को लगता है। तो जो दो लाइनें हमने सेलेक्ट की हुई है उसको उसका सेंटर वाला प्रॉब्लम करेगा ऐसा है कि ये हमारे ग्रेजुएट का और अभी तक है दो लाइनें लास्ट में हमने दिखाई हुई है तो आपने उसके बीच में डाला तो बीच में मैंने सेंट्रोइड में डाला उसको लाइन जो मॉडल जो की ना हाँ मैंने उसको 500 का तो 250 पे वो लाइन डाला ढाई सौ डाला किसी को 250 पकड़ के 250 तो ऑफसेट तो है ना ठीक है सो नेक्स्ट इज मॉडलिंग ऑफ वेट कंक्रीट फ्लोर इस तरह करेंगे हम कोई जरूरत नहीं वेट नेक्स्ट कम्स वेट कंप्लीट कर लेते हैं तो उसी में फिर डिफाइन करना पड़ेगा ना कि मैं क्या हम करेंगे ना उसको कंस्ट्रक्शन स्टेजेस में कर देंगे ना अच्छा हाँ उसमें ठीक वैसे लिखेंगे ना ठीक नेक्स्ट कम्स इज रिस्ट्रेस डेफिनेशन हो गया ना कुछ लोग के थिंक if I go double click on this प्राइस वेरियर हो गया वेरिंग कोड हो गया रिस्ट्रेस पेंडिंग के टेम्परेचर्स हो गया वेट कंक्रीट तो हम करने भी नहीं I simply save it and I just give it an export export करता हूँ वो बोलता है two cases are not used should I delete them no give them बस देखने के लिए कि मेरा मॉडल वगैरह सब सही चल रहा है कनेक्शंस वगैरह अगर सब सही है एसएसडी पे जाता हूँ लीनियर एनालिसिस पे जाता है मेजर से होंगे डिविटर सिस्टम विजुअलाइजेशन क्रैश बैरियर ये देखो इसका डिफ्लेक्शन यहाँ पे ज्यादा ही है आया नहीं वो नोट कैसे मैं डबल क्लिक कीजिए डबल क्लिक कीजिए डोंट डिलीट ठीक है यहाँ पे तो है मेरे पास ठीक है ना यहाँ पे आया था हाँ तो उसका नाम है वो एनालिसिस बन रहा है अच्छा जो मॉडल इज इन देखो सेव पे क्लोज करना क्या करना है हाँ सेव पे क्लोज करना है वीडियो एनालिसिस 16 वैल्यूएशन देखिए आप व्यूअर देखिए जिसमें कुछ नहीं आ रहा है तो वो तो एरर दिखा देगा फिर एक्सपोर्ट के लिए वार्निंग्स और एरर्स करे होगा करोगे तो लाइन मॉडल को लिख रहा हूँ ओके करेक्ट इसको भी सेव करके एक्सपोर्ट करना पड़ेगा चीजें अभी सबसे पहले सेव करके एक्सपोर्ट करना पड़ेगा एरिया वेरी गुड ना बस एक्सपोर्ट करोगे वो सेव हो जाएगा एक्सपोर्ट करेंगे okay so your loads are defined your geometry is done and just confirm that if you have file okay ये क्लिक कर रहे हैं ना सेलेक्ट एलिमेंट नोड एलिमेंट okay now proceed with visual definition मेरी यार रंगा से होगा yeah no right analysis right click calculating
Okay, so you're through. Now we need to define pre-stressing system. Pre-stress definition. सर इसमें जब मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ इंपोर्ट तो हो जा रहा है दिख रहा है मेरे को बट एक कुछ एक्वा वाला कुछ है फिर से करूँगा मे बी मेरे कुछ एलिमेंट लाइन पे नहीं है यार वो प्रिंट कर देने से ये दोनों तरफ कितना डिफरेंस ज्यादा होगा फिर और वेरी गुड से ज्यादा उसमें आ रहा है बेटर टू गुड से Yes, sir. Some about this again. इसमें क्या हो रहा है ना कि अभी आपने क्या कि दोनों सपोर्ट प्रिंट दिया हुआ है नॉर्मली तो प्रोडक्ट होता है तो टेम्परेचर जैसे कोई स्ट्रेस नहीं आता जो है दोनों तरफ प्रिंट कर दिया तो काफी अच्छा डिस्कशन चल रहा है इसमें वैल्यूएशन अच्छा हो रहा है इसमें क्या वैल्यू भी देख सकते हैं इस कंडीशन में इसी देख सकते हैं दिक्कत है क्या क्या या एक बार और मेरे अभी इसी का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है अभी तक मैंने वो टेपरिंग नहीं किया टेपरिंग करने में section 4 construction stage 0 is not connected. For shear, please check shear center principal regions of panels for the कनेक्शन को यूज किया कि नहीं किया अभी क्या फोटो ठीक है If there is gap between this and this, these two. okay wait once I need to click this ये ना वही तो ये क्या है आपके लिए जो है ऊपर वाला और नीचे वाला ना हाँ। गैप ऊपर वाला नीचे वाला डिलीट करो हाँ आप मिनट ठीक से करो उसको और मॉडल करो इनको ऊपर वाला डेटा है ऐसा पूरा और तो अगर ठीक से ऑन करो तो वे वो मॉडल के बीच स्टेप्स and we need to can I do it now? दो मिनट ये हैंग हो रहा है मैं उसको वहां से इंपोर्ट कर रहा हूँ अपने को सबसे पहले करने जो इंग्लिश में आपका तो मतलब पता नहीं क्या जरूरत नहीं करने सब पता है लेकिन मुझे दुनिया में नाटक करना पड़ता है अरे हाँ दुनिया में आके नाटक कर रहे हैं ऐसे अच्छा वेरी गुड सर डिड कैच इट वेल control see what you should do is also keep in mind that ये जो grid दिख रहा है ना ये हाँ that means you can only select some of your locations अब कर रहा हूँ अब सही आएगा now it will yes click there correct उतना पकड़ लिया वो sufficient है mirror it please do it so now what we do is so what sir is saying that ये ऐसा है so sir was discussing this temperature negative case ऐसा दिख रहा है sir तो my question is what will be stresses getting generated in this case यहाँ पे गर्डर में कितने स्ट्रेस लेवल्स कैसा होगा दोनों फिट किया हुआ रिलीज कर तो जीरो होगा दोनों फिट कर देने रिलीज राइट साइड रोलर रोल है ना इसमें तो डिफरेंशियल तो फिर जो उसका अपवर्ड बेंडिंग तो नहीं होनी चाहिए क्या बहुत स्केल्ड अप है सर फिर तो कुछ ना कुछ स्ट्रेस आएगा तो जीरो नहीं मे बी ये थोड़ा इसेंट्रिकली मॉडल किया मे बी दैट माइट बी आल्सो द रीजन बट लेट्स हैव लुक एट व्हाट अच्छा तो आना चाहिए था अभी एक अच्छा क्वेश्चन आया इसमें क्या है कि दो अभी आपने बेरिंग लगाई है ना एक जनरल बेरिंग लगाई है लेकिन जब टेम्परेचर होगा आपका बेरिंग जो है तो बेरिंग का जो ओरिएंटेशन उसके से रखेंगे हम जो है वो जो कि स्टेज डेवलप नहीं होंगे तो वो जो है उसको अगर मान लीजिए हमारे डेवलपमेंट प्लान देना होगा तो हम कैसे देंगे अलाइन कर सकते हैं फिट कर सकते
वो क्या कौन सा काम किस कमांड में रहेगा, तो अपना सैम्पल बताइए। अब क्या कर सकते हैं वो right? देखो दो चीजें, there are two ways to go about it. You can select this, you can go to structural elements, you can go to align elements command, align elements. तो पूछेगा you want to align about z axis, तो select करना, वहाँ पे एंगल डालना, वो रोटेट हो जाएगा. अदरवाइज आपने ऑलरेडी ये एक्स पी वाई पी जेड लोकली कर दिया है. अगर आप प्लेसमेंट अगर मॉडल करते हैं इसमें, तो वो केस में अगर आप सिर्फ प्लेसमेंट को रोटेट किया तो प्लेसमेंट का कोऑर्डिनेट सिस्टम लेता है वो. तो रोटेट कर सकते हैं. सपोज करिए मुझे जो है कि बेरिंग को रोटेट करना है अपने एक्सिस के अबाउट जो है. हाँ कर सकते हैं. 10 डिग्री रोटेट करना है. करता हूँ मैं. rotate about z axis, rotation angle, F30 कर रहा है ऐसा अपन 20% होता है. Yes, you should go for precision. 550 में वाइंड अप करेंगे, ठीक है? ठीक. थोड़ा सा आधे घंटे के लिए. क्या बात. For pre-stressing, what you need to do is you need to go to the next tab, and you need to first define the pre-stressing system. So pre-stressing system is defined in systems. Okay, the first tab है वो. Material तो हमने already defined किया है, so there is an option for pre-stressing systems here. I double click on that, and I give it a name 19P15. Number of strands is 19, and strand area is 140 mm square. और डाल सकते हैं, right? Yeah. Here K1 value as 0.783. And you see here that reference force per tendon is 3830.4 kN. So हम इसे सेंटर में है. But somewhere I want to apply 1456 MPa, somewhere I want to apply 1445 MPa. So system अलग अलग डिफाइन करना पड़ेगा. ये जो वैल्यू है, इसको हम ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन या कहीं और भी चेंज कर सकते हैं. You can do both ways. हम अलग अलग सिस्टम डिफाइन करके भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं. ठीक है. प्रैक्टिस में स्टैंडर्ड जो चीज जो चलता है वो करते हैं कि एक स्ट्रैंड से लेके 19 स्ट्रैंड्स तक 19 प्रीस्ट्रेसिंग सिस्टम बनाते हैं. और आपको सपोज 13 ही देना है तो 13 वाला असाइन कर दो. नहीं वो ठीक है. 19 स्टैंड से रहेंगे, लेकिन जो फोर्स है जैकिंग फोर्स कम ज्यादा कर सकते हैं आप. कम ज्यादा कर सकते हैं. यहाँ पे कहीं और कर सकते हैं. उसके लिए अलग सिस्टम बनाएंगे. So next is immediate losses. Keep this value from here. I am giving 1.318 Hubble coefficient. Further, You ऊपर क्या लिखा है? फ्रिक्शन कोएफिशिएंट फॉर स्ट्रेसिंग एंड फॉर रिलीजिंग. friction coefficient. और स्ट्रेसिंग एंड रिलीजिंग अलग लिखते हैं. So Sofistik can go for, मतलब इसके टर्मिनोलॉजी एक्चुअली यूरो कोड से आता है. मतलब इसमें ऐसे कि you can assign stress, release, re-stress and release. ऐसा तो इसलिए वो रिलीजिंग का ऑप्शन देता है.
Basically when I use in practice, मैं ये जो interface है usually इसको use नहीं करता, मैं आपको उससे तो लेके जाने वाला हूँ, but I just want to show you how pre-stress is modeled in graphical user interface. वहाँ पे तो we have got standard specified input values exact specific to the ISC 112 जो भी है वो हम करेंगे. अभी के लिए ये numbers रहने दो. Then I go to the geometry and I keep it 97 mm. I'm happy with it. I do not touch any at any other place. I simply say okay. बस मैंने एक ही प्री स्पेसिंग सिस्टम मॉडल किया है and the name is 19T15. The next thing that you need to do is प्री स्पेसिंग सिस्टम होगा ना सर? हाँ? नहीं मैंने किया तो है 19T15 यहाँ पे. एक डिस्टेंस में आपको हो गया कृष्णा वो प्रॉब्लम सॉल्व? अभी एरर नहीं आ रहा है. Good. Congratulations. उसी ये टेंडेंस मैनेजर में जाना पड़ेगा डिस्टेंस में. हाँ? टेंडेंस मैनेजर स्पेसिंग सिस्टम का डेफिनेशन ना सर? ये है यहाँ पे. कर दिया ना आपने 19T15. Okay. Now you need to go to definition of an axis. You see that here is an axis. होता क्या है जो pre-stress जो define जो करते हैं Sofistik में, that is always with respect to an axis. Okay? तो मैं क्या करता हूँ कि एक axis create करता हूँ along the length of my girder and I do it from this end of this girder to this end. Okay? For that what I do is I say L enter. I just draw a line, AutoCAD line, right from start of this girder to end of this girder here. You see that? Okay. एक simple AutoCAD line मैंने model किया, draw किया है. I can select that line as well. What I now do is I go to axis. What I do is now I go to axis. Right click and I say new axis. Sorry, not new axis. I use this option. Create axis from 3D AutoCAD curve and I give it a name G2. And I simply say OK. And it asks me to select the objects. मैं मेरे ये लाइन मॉडल में से कर रहा हूँ. The line is modeled here from here to here, a straight line along the length of the girder. I go to axis, right click, create from 3D AutoCAD curves. I give it a name G2. I say OK. And I click on this line and I say enter. As a result, नहीं सिर्फ लाइन को सिलेक्ट किया मैंने. So G2 is an axis that is modeled along the length of the girder. एक्सेस आ गए नहीं है. Wait for it, right? Access, right click on 3D AutoCAD curves. G2, okay. Select your line, select हो गया. Enter अब G2 आ गया. ठीक है? So we will focus only with this line, okay? G2. And what we now do is we go to pre-stressing now.
and we say we would want to model spline geometry. Okay. So it is PT editor is the editor for that it is you want to create it. It asks you to select an axis. इसलिए हमने वो axis model किया. Otherwise कोई जरूरत नहीं था. So it is with respect to the axis. So this is how you see. So this is elevation view. This is plan view. Okay. So basically you will be modeling a cable element along the length of the axis. So how it works is, the principle is that you define the station points and the cable local coordinates u and v with respect to the axis. So how it works is, so what I want to achieve finally is this. What I want to finally achieve is this. There is a girder here at the top. Sorry, there is a girder here like this. Okay. So there is girder here like this. And I want to model pre-stress in such a way that it is straight here, parabolic from here to here. Something like this. Okay. For that, what I need is, I need to tell that, let's say this is my reference axis which is at the top of my girder, right? This is G2, reference axis G2. For that, what I need to do is, here at this location, at a station point, at a station, okay? At 0, vertical coordinate, this distance from here to here is, let's say, 0.6 meters. Okay? When you come over here, let's say that distance 5 meters, and here it goes down to 1.25 meters from top. Okay? Over here you go and say that it is at mid-span, and let's say it is at 15 meters. And here also your depth is 1.25 meters. Here you go, which is at 25 meters. And here you say that 1.25 meters. Okay. And again you go here and you say that at station point 30 meters, it is at 0.6 meters. You need to only specify these 5 points. Okay. What it does is it draws spline geometry. It draws a spline. It draws line between this place to this place, this place to this place, this place to this place. Here you want a straight line, not a spline. So what you do is you give additional constraints, saying that angle should be 0 from this, the horizontal angle should be 0 so that it will become a straight line. Additional. Let's see how it goes. So what I do is, so I got first station point 0, last station point is 22 meters girder, my basically in this case, and this is 11 meters here. What I'll do is I'll just right click and I say insert row after, and let's say that at 5 meters is my second station point, and at insert row after, that is at 17.952 is my fourth station point. V is my vertical coordinate and I am looking at it in the elevation view. Okay. Here I put my V value as 0.5 meters. Further I put it as 1.25 meters, 1.25 meters, 1.25 meters, and 0.5 meters. Something like this. You see that? You get what I'm saying? Exactly. Exactly. You don't need to give coordinates at every 0.1 meter and all that. बस आपको ये 5 होता क्या था पहले में जब नया नया था तब ये प्री स्ट्रेसिंग से बहुत डरता था तब मैं मोदी सर के पास गया पता ही क्या 5 पॉइंट मॉडल करने लगे अब पता नहीं तब मैं सोचा ऐसी बात है कि व्हाट यू कैन डू इज मैं इसको 4 मीटर पे लेता हूँ चाहे सॉरी नॉट 0.44 मीटर स्टेशन पॉइंट थोड़ा इधर शिफ्ट किया मैंने हाँ 3D में अभी मैं वर्टिकल देख रहा हूँ मैं हॉरिजॉन्टल प्लान में देखो तो यही है सेंटर पे मैं दिखा दो आपको वो भी अब मेरा प्रॉब्लम क्या है ये स्ट्रेट नहीं ये दिख रहा है दिस इज स्टिल अ स्प्लाइन I don't have a spline over there I need it a straight line
So in that case, what is true is horizontal inclination. Okay, sorry, the vertical inclination at these three station points. I selected three of them, and vertical inclination I'll put 0. वो straight line बन गया. दिख रहा है? You see that it is absolutely a straight line now. You see that, right? मेरे को और भी constraining points ये रहता है कि anchorage length है initial वो 1 मीटर straight रहना चाहिए. तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे जाके straight in पॉजिटिव डायरेक्शन 1 मीटर के लिए स्ट्रेट करना है मेरे को. तो ये फर्स्ट 1 मीटर स्ट्रेट आ गया ये स्टेशन पॉइंट पे. ये लास्ट में जाके मैं बोलूंगा ये जो स्टेशन पॉइंट ये देखो हाईलाइट होता है, व्हाइट होता है. इधर भी 1 मीटर स्ट्रेट चाहिए मेरे को, तो वो स्ट्रेट बनता है यहाँ पे. देयर इज नो स्प्लाइन देयर. अगर ये आपको टेस्ट करना है तो इधर 2 मीटर करके देखो, ये दिख रहा है कि 2 मीटर से थोड़ा असर समझते हैं. 2 का 1 किया तो दिख रहा है. यू नोटिस दैट आई डू इट 2, सो इफ आई डू इट 3 इट इज गोइंग बियॉन्ड इट्स रेंज. So I make it 1 here. Okay. अच्छा क्लियर ये बोर्ड के साथ असर रेंज देगा, ये बताएगा कि ये रेंज बराबर नहीं है. थिंक कर रहा था वहां पर. हाँ वो बताएगा. वो क्या करता है मतलब वो कहाँ से होता है डेफिनेशन. अगर आपने डक ज्योमेट्री में जाके वहाँ पे रेडियस का कुछ वहाँ पे परमिसिबल रेडियस वो अगर डिफाइन किया तो वो वार्निंग देगा कि इतना रेडियस यहाँ पे बैठने का है. कभी कभी ऐसा रहता है यूजर ऐसे इनपुट देता है कि जो जिससे वो लाइन ही नहीं बनता है, मतलब वो उसके रूल्स कंस्ट्रेंट्स फॉलो नहीं होते, तब भी वो बोलते हैं कि ऐसा मॉडल ही नहीं किएगा. मुझे भी यार डिटेल्स देना है इससे. मेरे पास 5 मीटर वाला पॉइंट है. हाँ आप डिटेल्स देना है. अच्छा ये जो 5 मीटर वाला पॉइंट है दैट इज नॉट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एलिमेंट्स. yeah it is not. That will be the end of the curve. Yeah, it is end of the curve. So I cannot define like कि say एक लाइन आती है, बड़ी लाइन आती है जो इसको कंप्लीट करती है तो वो टाइम and I define a radius there. ऐसा नहीं What कर expression है? ये नहीं. इसमें ये हो सकता है कि इन्फ्लुएंस लेंथ ऑफ रेडियस. ये ना इन्फ्लुएंस लेंथ मतलब ये जो मेरे जो पैरामीटर्स में दे रहा हूँ अब तक, तो इसमें मैं बोल सकता हूँ कि इसका जो इन्फ्लुएंस है मेरा, फॉर एग्जांपल दिस वन, इसका जो इन्फ्लुएंस है ये मेरा कुछ 5 मीटर्स तक होना चाहिए, समथिंग लाइक दैट. इफ आई put 2 or let's say more than that 50 meters ऐसा है. इट वर्क्स कहाँ पे इसी जगह पे जो +5 पे नहीं आप वो नहीं कर सकते. नहीं ऐसा नहीं जैसे कि केबल जो डिफाइन करते हैं अपना हम्म, मीटर कि पहला जो पॉइंट है वहां से कुछ एग्जिट है या वहां से लाइन है सही है. सेंटर पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन. हम्म, ठीक है. और फिर जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे आप प्रोवाइड रेडियस प्रोवाइड करते हैं. इसी तरह ड्रॉ मॉडल है. यहाँ पे दो चीजें कैसे, यहाँ पे हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं इसमें ऐसा आपका वर्क फ्लो है कि आपका केबल प्रोफाइल यहाँ पे सेट होगा. इसको आप एक्सपोर्ट करोगे. जब भी आप इसको एक्सपोर्ट करोगे तब वो क्या करेगा, आप एवरी 0.1 मीटर्स पे आपको इसका यू वी एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट देगा और उसके साथ उसका जो रेडियस है वो भी देगा. ऐसा कर जब एक्सपोर्ट करेंगे तब. हाँ. बट से केबल प्रोफाइल इज ऑलरेडी जनरेटेड एज समवन, उसको मुझे यहाँ पे लगाना है और वहाँ पे ये रेडियस है और वो की पॉइंट्स पे मुझे एलिवेशन लगाना है. There are two ways. Either you go like this if you think that it is approximation, it's not coming correct. तो उसके जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है उसको आप सीधा ऑटोकैड में लाइन बना सकते हो उसका, और उस लाइन पे क्लिक करके बोल सकते हैं कि ये कैसे सिलेक्ट लाइन करके गटर बनता था, ऐसे सिलेक्ट लाइन करके उसका टेंडन बनता है. रिव्यू का जो काम चलता है ऐसे चलेगा. हाँ बट वो ज़्यादा बड़ा एक्सटेंड नहीं है. ये टोटल कर इस स्टैंड में जैसे 3 पॉइंट्स सारे जगह देने का कोई मतलब नहीं है. अगर मैं प्लान व्यू में जाता हूँ और मेरे को ऑफसेट देना है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, let's say that I start with 0, my cable goes out by let's say 0.2 meters, फिर बाहर आएगा और बाहर गया 0.2 मीटर से और बाहर गया 0.2 मीटर से और अंदर गया फिर से वापस. अगर मेरे पूरा स्टार्टिंग से 0.2 मीटर पे करना है तो मैं ऐसे भी कर सकता था. ओके, फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी आई विल कीप दिस u कोऑर्डिनेट एट 0. ओके, keep it at 0. u and v is clear. So this was definition of the
geometry, product geometry. Now comes definition of tendons. So the next step. So you can specify start station, end station, कुछ आपको recess, offset वगैरह कुछ रखना है तो, okay. Axis length वगैरह कुछ हो तो, इसमें आप बोल सकते हैं कि stressing stage is 11 and grouting stage is 12. जिस स्टेज में स्ट्रेस करते हैं उसके नेक्स्ट स्टेज में हम ग्राउंड करेंगे. This is the idea. Number of tendons here is 1 at the moment. Okay. आप ऐसा कर सकते थे वहाँ पे strength 19 का 1 करके यहाँ पे 19 कर सकते थे. Coming to this side, name is G21. I can simply update this name, but I keep it as it is at the moment. Tendon number is 1 and load case I keep as 4, which is pre-stress. Okay. ये सेम वही इनपुट है जो यहाँ पे. I will say pre-stressing limits as per European standard, and pre-stress direction is from right. If you there is a drop-down menu wherein you can select from right, from left, or you have got two side pre-stressing, then from right then left, or from left then right. I keep all these factors as per European standard for now. I don't change anything. Then I simply say okay. Moment I say okay, you see that here is red colored line model. Okay, here this has got this arrow like this. If I look at it in the elevation view, you get to see it something like this. Okay. Now what I do is, let's say that this is the only pre-stress that I have, and I simply export it. So it says there is one load case not modeled. I say don't delete that load case, keep it. But I say simply okay. I export it. You see, minimum radius of 7.6 or 7.619 meter is lower than permissible value of 8.3 meter. तो जो रेडियस था 8 मीटर का परमिसिबल है, तो मैं उसको और छोटा किया तो यहाँ पे वार्निंग दिया. इट्स एन वार्निंग. सो यू कैन गो बैक नाउ. अगर आप उसका लिमिट बढ़ा दो, नहीं तो उसका which other way get rid of the warning. That warning it gives. तो SSD में गए और what I do is now middle वाले गर्डर पे मैंने मॉडल किया ना. So what I do is here going here, I go to cross sections and I say only quad sections, and I can see that cable profile over here. You see that? You see the cable profile, right? Right. Now what I can do is I can go to linear analysis and simply say okay. मतलब उसमें pre-stress का भी केस आया है अभी, इसलिए मैंने बोला go to system visualization and there is pre-stress case. So if you pre-stress it, it is bound to hog, and it is hogging in my case. I go to full visualization and I'm okay with the pre-stress definition. This is what it means, right? What I further do is I have further more cable profiles, right? So in that case, I go here and instead of modeling it from now, like this, what I do is I go to pre-stressing, I go to this, and I go to right click and I say clone. ऑफसेट पूछता है, जो 0.2 मीटर का जो ऑफसेट था उसके साइड वाला जो रहेगा वो 0.2 मीटर का रहेगा मेरे ख्याल से, राइट. तो मैं उसको 0.2 मीटर का ऑफसेट देता हूँ. ऐसे ओके, एंड इट्स जस्ट मॉडल नेक्स्ट टू इट. और एक मैं मॉडल करता हूँ, उसको बोलता था क्लोन, और इसमें ऑफसेट देता हूँ -0.2 मीटर. वी ऑफसेट कुछ नहीं आएगा उसमें. तो ऐसे मेरे 3 केबल प्रोफाइल्स मॉडल हो गए वहाँ पे. So if I look at things here like this, there are 3 cable profiles going from top to bottom here. Okay, something like that. And hopefully they are not out of my, that I just gave 0.2 meters, nothing else. Similarly, I can model cable profiles for this girder and all. If you want to update, let's say that this profile, okay, center में usually ऐसा करते हो, ऊपर रहता है फिर नीचे आता है वगैरह वगैरह वैसा. So I can again go back and I can keep updating here कि मेरे को ऐसा नहीं चाहिए था, मेरे को अपडेट करना है, चेंज करना है, तो you will have to modify the B coordinates. अगर आप जो क्लोन प्रोफाइल है इसके ऊपर अगर डबल क्लिक करके देखेंगे, अच्छा क्लोन को ऐसे नहीं कर सकते. क्लोन इज गवर्न्ड बाय these coordinates only. ठीक है. So this is how you model pre-stress. हम क्या कर सकते हैं? I go here and I say copy to different axis. दूसरा एक्सिस बनाना पड़ेगा और वहां पे हम कॉपी करेंगे.
ऐसा करेंगे. It is I think useful when there are straight girders जिसमें लेंथ भी चेंज हो रहा है, तो मे भी वो थोड़ा मेरे ख्याल से वो लेंथ को एडजस्ट करता है नहीं करता है मेरे को पता नहीं. डिफाइन किया हम्म. अपने एक्सेस में जो वैल्यूज डाली तो स्टेशन पॉइंट्स है ना सर, so it's not based on, अगर वैसा होना था मैं बोलता हूँ उसमें और पॉइंट्स इन द स्पैन एग्जैक्टली स्पैन स्टेशंस कर देते तो ऑटोमेटिकली अपडेट कर देता. तो कर लेंथ सही नहीं डन कर देता. बट एक्सेस को डिफाइन करना पड़ता एक्सेस वहाँ पे डिफाइन करना पड़ता. लेंथ ऑफ सॉलिड है, जैसे मान लीजिए कि 32 है, 30 है, 29 है, हाँ, तो स्पैन स्टेशन, ये जो स्पैन स्टेशन एक्स है ना, मतलब वो क्या करे उसको गर्डर के प्रोपोर्शन में वो मॉडिफाई करते जाएगा. So there are two options. One is station, which is an absolute system. तो 0 से लेके 22 तक जाता है. लेकिन स्पैन स्टेशन वो है कि गर्डर का प्रोपोर्शनेटली 1.3 मीटर्स, 0.5 मीटर्स, 0.5 L, 0.7 L और 1 L. इसके ऊपर आपको क्या क्या कहाँ पे चाहिए वो वैसा डाला जाए ताकि वो उसके लेंथ के हिसाब से लेगा. वहाँ पे एल का वैल्यू चाहिए. नहीं जैसे मान लो सपोज करो कि आपको 30 मीटर का 32 मीटर का है, फिर जरा आप सीधा बराबर रखने वाले हो, बीच के पोर्शन रेस करने वाले हो, अच्छा केबल के अंदर है, तो वो मैं क्या चेंज कर दूं कि मैं वही चेंज करूंगा ऑटोमेटिकली, वो सॉफ्टवेयर में समझ ले उस चीज को, वो स्टेट चेंज करना है, बाकी सब कुछ रहेगा, नंबर के मान सेम ही रहेंगे, तो चेंज करना हो तो नंबर चेंज कर देंगे कुछ है, लेकिन बाकी सब कुछ सेम रहेगा. आप स्पैन स्टेशंस का ऑप्शन यूज करो हो जाएगा. तो सारी रेशियो पे आ गया ऐसा कर सकते हैं. इससे स्टार्टिंग वाला जो फर्स्ट 2 पॉइंट्स वो हमें मुझे सेम चाहिए ट्रांसफर है, तो उन दोनों को मैं स्टेशन से ही दूं पॉइंट मतलब 0 से कर 4 सकते और बीच वाला जो पोर्शन रहेगा कर सकते हैं. उसको फिर मैं रेशियो से दे दूं. कर सकते हैं. यहाँ पे जाओ स्पैन स्टेशन कर दो और ये रेशियो से आ जाएगा, बाकी सारे ये करो. तो मेरा स्टार्टिंग वाला जो है एब्सोल्युटली यू कैन डू दैट. रेशियो दिया गया है. हाँ क्या रेशियो दिया है उसमें डाला ही नहीं ना अब तक. मैंने पॉइंट पे डालना चाहिए वहाँ. फिर उसको डालने की जरूरत नहीं है. बट गर्डल आपको एंड तो वो फुल गर्डल करना पड़ेगा. 22.95 हो गया गर्डल में से चेंजेस टू 21 मीटर्स. तो अगर आप केबल कॉपी कर तो वो 22.9 मीटर की तो कॉपी होगी. करके देखते हैं. पर I got what you're saying. कॉपी अगर करते तो मेरे ख्याल से वो खुद से वो चेंज करना चाहिए. लेट्स डू दैट. लेकिन मैं बोलूंगा इसमें ज्यादा जाओ मत, क्योंकि हम इसको ऐसे यूज नहीं करने वाले. लेकिन हम तो ऐसे ऐसे कौन करेगा. ये 5 पॉइंट डिफाइन करने के लिए हम इतना सारा खोल के वगैरह बैठेंगे तो कैसे होगा. तो मतलब इनफैक्ट एक्सेस बनाओ हर गर्डर के लिए. तो कैसे करेंगे? वो टेडी में क्या होता है कि ये जो फर्स्ट मोड है और ये गर्डर का लास्ट मोड है, उसमें एक लाइन बोलने का, उसमें बोलने का कि मेरा फर्स्ट नोड टू लास्ट नोड जाना है गर्डर के, और यही मेरा रेफरेंस एक्सिस है, और इसी एक्सिस के अकॉर्डिंगली मेरे को फर्दर मॉडलिंग करना है. तब आपको ऐसा मैन्युअली एक्सेस वगैरह बनाने की कोई जरूरत नहीं कैमरा बना के देंगे. है. खुद से बनाना है. तो तो ये सारे टेक्निकल पार्ट जैसे केबल प्रोवाइडिंग के लिए ये सब स्टेट इस तरह कोई बात नहीं. अभी मैं आपको कल मेरे पेरेंट डेफिनेशन कल का एक मैंने आपको जो दिखाया ना उसमें कैसे डिफाइन किया मैंने दिखा था. रिकमेंड नहीं करता प्रैक्टिस में कभी. अगर मान लो कैड बेस्ड मॉडल भी है तो उसमें भी रिकमेंड किया हम केबल वाला ज्योमेट्री यहाँ पे आपको सिर्फ लोडिंग तक आना है, एक्सपोर्ट करना है, बाकी को उसके आगे का एसएसडी में करना है. केबल प्रोफाइल भी एसएसडी में हो जाए. इससे बेटर होगा. मच बेटर. एक सेकंड लेट मी जस्ट शो यू. एसएसडी परफॉर्म सोफिस्टिक स्ट्रक्चरल डेस्कटॉप. देखो मैं आपको कुछ दिखाने जा रहा हूँ. ये एक एक्सेल शीट है जहाँ पे कि ऊपर बटन्स है. So these buttons link my these parameters to TDD code in the backend. ठीक है. मैं बोला रन कैलकुलेशंस तो पीछे TDD खोलता है और वो यहाँ का जो भी इनपुट है वहाँ पे फीड करता है, और
टेडी में मैं मेरा ज्योमेट्री मॉडल करता हूँ, सपोर्ट्स करता हूँ, लोड्स मॉडल करता हूँ, एवरीथिंग इन टेडी। टेंडेंस भी टेडी में होता है, कंस्ट्रक्शन स्टेज, रिपोर्ट वगैरह सब जनरेट उसमें होता है। इसमें जो इनपुट है दैट इज स्पैन लेंथ, एक्सेस एट स्टार्ट, बीम का जो डायफ्राम का जो क्रॉस सेक्शन का थिकनेस, टोटल लेंथ क्या आता है, अलाइनमेंट रेडियस क्या होगा मेरा, width of the bearing, height of the girder, loads क्या आ रहे हैं, width of मेरा deck वगैरह क्या आ रहा है, this is for box girder। मैंने सेम चीज इसके लिए भी बना के रखा है, वो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ कल। टेंडन के लिए इनपुट ये है कि मेरे जो स्टेशन पॉइंट है 0, 0.2L, 0.5L, 0.8L, L ऐसा है। तो मैं वहां पे u कोऑर्डिनेट ये डालता हूँ और v कोऑर्डिनेट ये डालता हूँ, u v कोऑर्डिनेट। As a result, it goes, so there are 6 cables and these are my number of strands, 14, 14, 3, 3, 3. If I run calculations, it opens this project file, okay, which is steady code like this, okay. वो सारा data यहाँ पे update करता है। As a result, what it does is, it gives me, it generates a model file for me. That is something like this, and that has got all construction stages over here. This is familiar to you now, right? इसमें जो मेरे कंस्ट्रक्शन स्टेजेस जो है, स्प्रिंग स्पैन, क्रैश बैरियर, प्री स्ट्रेसिंग, क्रिप श्रिंकेज वगैरह ये सारा उसमें आ गया। उसके बाद मतलब उसमें ज्योमेट्री अपडेट करके, और ये देखो दिस इज कर्व ज्योमेट्री ऑलरेडी। उसके बाद विन ग्राफ देखने जो हम देख रहे थे, यहाँ पे क्लिक करो, विन ग्राफ खुल जाता है। मेरे जो केबल प्रोफाइल से ये यहाँ पे दिख रहे जो कर्व केबल से, ये जो ब्राउन कलर का जो दिख रहा है ना वो है। मेरे को रिपोर्ट जो जनरेट होता है वो मैं बोलता हूँ ओपन रिपोर्ट। तो मेरे यहाँ पे जो है वो रिपोर्ट जनरेट होता है, ऊपर मेरा डिजाइन कोड आया, मटेरियल्स आया, उसके बाद मेरा क्रॉस सेक्शन प्रॉपर्टीज आया, उसके बाद मेरे पास जो भी मेरे कंस्ट्रक्शन स्टेजेस का जो भी ज्योमेट्री है, फिर कंस्ट्रक्शन स्टेजेस जो है वो आ गए, जो रिजल्ट है उसके आउटपुट्स आ गए, उसमें मेरे को कहीं पे स्ट्रेस वैल्यूज वगैरह दिखाने थे वो आ रहे हैं। जो भी मेरा विनग्राफ का जो आउटपुट है, जो भी सीक्वेंस में चाहिए कंस्ट्रक्शन स्टेजेस के, वो मैं बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स और मेरे सीक्वेंशियल जो भी मेरे स्ट्रेस वैल्यूज है वो यहाँ पे डाल के रखे। मैं फाइनली जाके बस चेक करता हूँ, यहाँ पे मेरे गर्डर बॉटम में टेंशन आ रहा है 8.39, मतलब आई नीड टू इंक्रीज माय नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स। आई गो बैक हियर और मैं जाके बोलता हूँ मेरा 14 14 3 है ना, यहाँ पे मैं 5 5 कर दो लास्ट वाली तीनों में, समथिंग लाइक दैट। आई गिव इट अ रन वंस अगेन, go open my report here and only see this page। 8.39 का मेरे कंप्रेशन में जा रहा है क्या, 0.5 कंप्रेशन आ रहा है क्या, हो रहा है तो मेरा केबल प्रोफाइल एसएलएस में मेरा चेक सेटिस्फाई हो गया। एसएलएस में बैठते तो यूएलएस में मैं तो गारंटीड बैठते हैं, और इसमें भी वो चेक देता है जो मैंने अभी इसमें डाला नहीं। नाउ व्हाट आई वांटेड टू शो यू इज if I open this project file, how it is working on my tendons now, okay? So there is module called tendons here, okay? Let's focus on this. इतना पार्ट एक टेबल है, ये जो एस है ना, एस इज माय स्टेशन पॉइंट, जो मेरे केस में भी 0 था। C1 इज सेंटर पॉइंट, जो मेरे केस में जो भी 11 वगैरह जो भी था, और ये मेरा लेंथ है जो मतलब फर्स्ट जो वाला जहाँ पे मेरा पैराबोलिक जो आके जो रुकता है, या और यहाँ पे जो लास्ट वाला वैसा है। यस, देखिए वो कैसे दिक्कत क्या होती है कि प्रोफाइलिंग में आपने बहुत सिंपलीफाई कर दिया है ये। अगर 0.2 वाला इधर वाला 0.5 वाला इधर एलिमिनेट कर सकते हैं तो चल जाएगा, क्योंकि हमें बिट मालूम होता है कि क्या करना है केवल बनाना, हमको स्टार्टिंग मालूम होता है, ये जो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा इधर उधर। तो अगर वो बेटर है कि अगर क्या ये पॉसिबल है किसी तरीके से कि बिट में स्टार्टिंग में कोऑर्डिनेट और बाकी ज्योमेट्री उसके बाद है अपने आप हमारी है और कांस्टेंट मॉडल पोजीशन बाद में अपना जनरेट करते हैं। वो केस में क्या प्रॉब्लम होता है, सपोज आप अभी मैंने आपको इसका तरीका बताया, आप बस ये एक पॉइंट दे रहे हो और ये एक पॉइंट दे रहे हो, और आपको कहना है कि इसके बारे में आपको ये नहीं, उसको कैसे पता चलेगा कि अब तक इधर तक मेरे को स्ट्रेट रखना है। वो केस में वो क्या करेगा, वो केस में प्रोग्राम ये करेगा। नहीं तो मैं क्या करता हूँ ना कि मैं जितना मेरा स्टेट है वो दे देता हूँ उसको, तो मैं वही बोल रहा हूँ, तो दे ही रहे ना फिर, मतलब कंजर वाला नहीं दो वही कर रहे हैं ना, पॉइंट मतलब कि स्टेट वाला स्ट्रेट वाले तो कुछ नहीं है, बाकी कंजर जो भी है वो तो कर दो, यहाँ से लिख रहा है लिखेगा इसका आउटपुट दिखाता हूँ आपको। तो ये 5 पॉइंट आपको समझ में आ गए, ये तो टेबल है। उसमें जो न्यू कोऑर्डिनेट था जिसको हम 0.2 रखते थे, मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम है xd1। xd1 को मैं क्या है, मेरे को बार-बार 0.2 0.2 0.2 5 बार लिखना पड़ता है उधर जाके,
मैं बोलूँ नहीं भाई मैं एक ही बार लिख दूँ 0.2 XD1 is 0.2 और XD1 को मैंने 4 बार 5 बार जो भी लिखा है वो यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। कमिंग टू V, TD और TD1 मेरे केस में सेम है, ठीक है। तो मैंने वो 0.4 या कुछ रखा था, 0.5 0.4 वगैरह समथिंग, एंड दैट DD वैल्यू वाज 1.25, ठीक है। तो जो आप वहाँ पे जो इनपुट जो दे रहे हैं एग्जैक्टली सेम इनपुट आप यहाँ पे भी दे रहे हैं और दिस इज मच इजियर, मच एफिशिएंट वगैरह। फर्दर इज ये जो वर्टिकल जो मेरे को स्ट्रेट लाइन करने के लिए मैंने 0 0 एंगल डाला था वो 0 0 0 3 0 है। मेरा जो स्ट्रेट लाइन में 1.1 मीटर जो डाला था इधर स्ट्रेट लाइन मेरा 0.6 मीटर है, दैट इज ऑल। इसमें ये हो रहा है कि मैं मेरा इस चीज को मैं कर्व वगैरह कर रहा हूँ तो वो कर्वेचर वगैरह सारा उसके साथ वो बट आप रेडियस कहाँ डिफाइन कर? हाँ रेडियस तो आपने बिल्कुल सॉफ्टवेयर पे छोड़ दिया ना। टेंडन का रेडियस बोल रहा है सॉफ्टवेयर। मैं इसका आउटपुट दिखाता हूँ आपको, होता क्या है। फॉर एग्जांपल दिस वन, ओके, द वन दैट वी मॉडल, आई एम जस्ट एक्सपोर्टिंग इट, आई हैव ऑलरेडी एक्सपोर्टेड इट। यहाँ पे जो पीडीएफ बनेगा उसमें टेंडन जनरेशन जो है, जो भी टेंडन का जो अभी आपने प्री स्ट्रेसिंग का जो इनपुट जो मॉडल किया है, एरिया ऑफ ईच टेंडन, नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स 3830 किलोमीटर वगैरह जो भी फोर्स आपको हुआ है, यहाँ पे आपको देखो हर 0.25 मीटर्स पे, ओके, सो यू कैन सेट इट एग्जैक्टली टू 0.25। यहाँ पे मैंने कुछ सेट नहीं किया इसलिए 0.25 0.499 0.731 पे दे रहा है आपको। उसका u एंड v कोऑर्डिनेट है यहाँ पे और आपको यहाँ पे इसका जो रेडियस है, you see that the radius is here, this is greater than 1000 तो 173 है हर पॉइंट पे ऐसा रेडियस का वैल्यू। नहीं, इसका ये बात बोलो, जैसे मैंने बताया कि हम कैसे स्टेट पॉइंट्स वगैरह पता है, की पॉइंट्स पता है, मैंने जैसे वहां से एक लाइन दिया और मैच कराया, तो दो एलिमेंट बोलते हैं सुनने में और आपने दिया इंटरसेक्ट किया और वहां पे आपने सर्कुलर कर्व कर, ये केस में वैसे नहीं चलेगा वैसा। लेट मी गिव अ थॉट टुनाइट एंड वी विल ये गेट 17 से 15 मीटर की रेडियस से मुझे मतलब जस्ट नहीं, ये केस में क्या होता है कि सो हाउ योर अप्रोच इज इन दिस केस इज, इसके साथ वो आपका x एंड y एंड z कोऑर्डिनेट भी जनरेट करेगा। If you ask for that output, they have not asked for that output. So you get x, y, and z coordinate at every 0.25 meter or 0.1 meter. You put it in the Excel sheet or send that entire file to your draftsman. Draftsman उसको plot करता है. So whatever exactly you have here in your model file exactly goes into the drawings without any iteration. एंगल नहीं पता हुआ एंगल देती है, एंगल ऑफ एंट्री एग्जिट यहाँ पे स्टार्टिंग में ना स्टार्टिंग में आप दे सकते हो एंगल। आपने दिया ना एक्सेल नहीं, शीट? अभी मैंने नहीं डाला है, ये यहाँ की बात कर रहे हैं ना। नहीं, और एक्सेल शीट नहीं मैंने नहीं डाला, एंगल ऑफ एंट्री एग्जिट में डाला। वो तो मतलब मैं मेरी प्रैक्टिस ये रही कि पहले मैं यहाँ पे स्पेसेस में बिठाता हूँ, फिर वो उधर ड्राइंग के लिए देता हूँ और वहाँ पे जो एंगल निकल के जो बाहर आता है वो मैं वहाँ पे देता हूँ। कभी अभी आपको चाहिए लिमिट करना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ, नहीं ऐसा नहीं। अभी नहीं है तो उसमें मैंने अभी तो एंगल का नहीं डाला। अच्छा आपको खुद का बनाया होगा। कौन सा ये वाला स्टेट जो है वो, हाँ ये एक्सेल शीट तो बता रही है, हाँ वो मैंने बना खुद का बनाया ये सॉफिस्टिक की हुआ। अच्छा है सोफिस्टिक की तरफ से आपने डेवलप किया है। हाँ कोई भी जगह बना सकता है, मतलब आप भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स फाइंड आउट फॉर द डे। आपका वो मैं आपको कल बोलता हूँ रेडियस का, अगर वो स्पीक टू पीपल टेक योर टाइम कल चाहिए। but I think that it is like you could all get what I wanted to say, I wanted to come. ऐसा नहीं हुआ कि I am going in some other direction, आपको कुछ match up नहीं होता है। So we are half the way, I say. Tomorrow we will focus on construction stages, live loads, modeling, differential temperature loads, combinations, extraction of stresses. That's all. हो सकता था हम कल के दिन में इसको निपटा के
परसों का दिन अपना काम कर सकते हो आपसे। फिर हमें उसके बाद अगर इसको कंप्लीट ऑफिस से करना है और परसों फिर अगर ट्रेडिंग से आने वाला है इंट्रोडक्शन करना है। नहीं, ट्रेडिंग का इंट्रोडक्शन कल से चालू है। कल से ये सारा काम ट्रेडिंग में करने वाला हाँ, जो पोस्ट प्रोसेसिंग है वो हम फोकस करेंगे कि आपने को टेडी पे ही ज्यादा काम करना है, बट वी विल एंटर इनटू टेडी वेरी सून। है। जैसे कि आपको मैंने एक छोटा टेडी कोड दिखाया ये वाला, ये तो आपको समझ गई ये क्या चीज है। सो आई कंपेयर द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का इनपुट विद दिस इनपुट, ताकि आपको कुछ, अगर मैं डायरेक्टली ये दिखाता तो ये क्या दिखा है, यू विल गेट comparison between this and you will be able to pick up. Don't worry about it. सॉरी वो टेडी क्या है, मतलब मैं थोड़ा रीड एंटर को ठीक है। Yes, sir, it's fine. ओके थैंक्स। वो मेरा देना डॉक्यूमेंट। हाँ मैं यही कर अच्छा, टेडी टेडी इसका is टेडी is that ये जो भी हम मॉडलिंग कर रहे हैं अभी यहाँ पे सोफिस्टिक के अंदर जो भी आप देख रहे हैं, ऑटोकैड बेस्ड कर रहे हैं, एसएसडी बेस्ड कर रहे हैं वगैरह, ये बिना कुछ करके आप सारा ऐसा टेक्स्ट पोस्ट कर सकते हैं। जो टेक्स्ट बेस्ड इनपुट का जो इसका जो फॉर्मेट है उसका नाम टेडी है, मतलब नोटपैड है। तो अभी मैंने जो एक्सेल शीट बनाया है इससे क्या करता हूँ, वो जो स्लाइड एडिटर कैसा है, ये इसका स्लाइड एडिटर है जिसका नाम टेडी है। इसमें लोड वगैरह जो एडिट कर सकते हैं मुझे, इससे एक फॉर्मेट होगा, इस फॉर्मेट में मुझे मॉडल सबमिट वहाँ चेंज कर सकते हैं। वो क्या लाइव लोड वगैरह जो है वहाँ जाके भी चेंज कर सकते हैं, वहाँ जाके डायरेक्टली इनपुट एंटर कर सकते हैं सबसे। एक्सेल शीट बनाओ, इस पे पेस्ट करो, वो क्या इस तरीके से है कि कैसा कोई प्रोग्रामिंग हो रहा है, जैसे स्टैंड की बस सिंपल ही है, स्टार्ट जैसा है, ये स्टार्ट का भाई बड़ा है। स्टार्ट में छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं, इसमें कंस्ट्रक्शन स्टेजेस कर सकते हैं, केबल कंपाइल कर सकते हैं। इसमें ऐसे कि इसका पहला डेवलपमेंट इसका टेडी का हुआ है। ये जो सॉफ्टवेयर प्लस एसएसडी, ये तो मतलब ऐसे कि मतलब ठीक है, मतलब यूजर्स को थोड़ा दिखना भी चाहिए, इसलिए वो बना दिया, बट इट्स कोर इज दिस के पीछे टेडी चलता है। लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग है इसकी, कैडिम करके नाम है इसका, खुद का लैंग्वेज। जैसे कि आपने बताया कि आरएम और सोफिस्टिक एक ही डेवलपमेंट होता था। I don't know. Certainly. But Sofistik was developed in 1970s in a university. इतना फिर ये पॉपुलर क्यों नहीं है सोफिस्टिक जो इतने से मुकाबले मार्केटिंग ही नहीं किया ये लोग तो। अभी कैसे ये इतना अभी कैसे लोग इस तरह से समझ रहे हैं, अभी लोग भी इतना कर रहे हैं। रिपीटिव वर्क ज्यादा है ना, मेट्रोस अभी सूरत मेट्रो 70 स्पैन का काम था, बॉक्स बढ़िया ही 70 स्पैन का डिजाइन आज के 7 दिन का काम है। पहले पुराने वेज में जाएंगे वैसे वाले, तो उसको दैट विल टेक मंथ्स एंड ईयर्स टुगेदर। आज प्रॉब्लम ये होगा कि आज मैं राइट्स में जाता तो बोलता चलो मैं जो कोड करता हूँ ये लोग उससे आधे ही कोड करते हैं, ये प्राइवेट लोग ये क्या चल क्या रहा है। बोला सर वो सॉफिस्टिक पूछ रहा है, ये क्या है खोल के देखो, चल रन करके दिखा दो, बोला मेरे को पहले ये देख के दे दिया, तो एफिशिएंसी बढ़ते बाकी। लोग पहले स्टार्ट करते थे विडास में आए, लेकिन विडास से जो ट्रांसफॉर्मेशन है कभी ज्यादा लोग नहीं देखा मैंने को। तो मुझे पहली बार जो है कि जो डिजाइन जो इसको इंटरनेशनल कंसल्टेंट रिफॉर्म वगैरह जो है और एक तो और कुछ जो है, तो उनको देखा था कि आराम सॉफ्टवेयर में डिजाइन करते हैं हम लोग जो है, तो ट्रांसलेशन वगैरह में हेल्प होती है। जो क्या है एक्टिव को जिम बना नंबर बना दिया, उसको इनएक्टिव कर दिया, बाद में उसको यूज कर लिया। हाँ वो तो कुछ है इसलिए लोग यूज करते थे जो इसे बनाना पड़ेगा बहुत छोड़ देते कि कल आगे बढ़ेंगे तो ये सही है स्टीयरिंग करवा के। अब इसी को जानता हूँ स्ट्रक्चर को भी उतना एफिशिएंटली यूज नहीं कर रहा है, लेकिन ये है कि उन्होंने दिया हुआ है तो आपने दिया हुआ है इस स्ट्रक्चर को ध्यान दिया है और उसके बाद आपको वहां पे टेकिंग आती है। हाँ स्पेक्ट्रम और कुछ स्ट्रक्चर सर वो बस सॉफिस्टिक ही यूज करते हैं ना, बाकी सारे इंजीनियर सॉफिस्टिक ही करते हैं। तो बात ये है ना, इट इज मैटर ऑफ एफिशिएंसी। इसमें काफी मतलब बाउंड ही नहीं कोडिंग वगैरह पे,
आप कुछ कुछ ऑटोमेशन मॉड्यूल्स बना सकते हैं, केबल स्टेज के लिए बना सकते हैं, पॉज बटन के लिए यू हैव एनीथिंग फाउंडेशंस के लिए कर सकते हैं, प्लेट एलिमेंट्स और लाइन एलिमेंट साथ में मॉडल कर सकते हैं। बाकी इसमें प्लेट एलिमेंट मॉडल करना तो बहुत बड़ी बात है। सुजित SUJIT 7435033298। इसमें ब्रिजेस भी कर सकते हैं, बिल्डिंग्स भी कर सकते हैं, दोनों इसमें कर दो। उसके लिए अलग कुछ ये नहीं, ये जेनरिक है प्लेटफॉर्म, टनल्स भी इसमें कर सकते हैं। इसका कॉस्ट भी सस्ता है लॉन्ग टर्म यूजेस के लिए। हाँ, मेरे को पता नहीं, तो मैं बोलूंगा तो गलत फिगर और सस्ता जाता है अगर मतलब आपका मतलब नंबर ऑफ यूजर जैसे बढ़ते हैं। लाइसेंस ले लिया, आपको फिर से पूरा लेने का जरूरत नहीं रहता है, आप 100 प्लस ही ले लेते हैं। अगर आपको 100 नंबर ऑफ इंजीनियर्स हैं, तो योर कॉस्ट विल बी वेरी लेस कंपेयर टू स्पेक्ट्रम। वो लोग ये सॉफ्टवेयर यूज ही नहीं करते, वो बस टेडी यूज करते ट्यूबलेस यूज नहीं करते फोर्स वाला हैं। यही नहीं कुछ है ही नहीं, नहीं, तो वो टेडी नहीं। वो बस टेडी में काम करते तो ये कोडिंग का फॉर्मेट आई मीन कैसे हैं। ये होता है। ये क्या है? CONC कंक्रीट कंक्रीट। कंक्रीट आप F1 दबाओ, F1 दबाओ। ओके ओके प्लीज थैंक्स। ठीक है ना, देख लो। हाँ ठीक है, ठीक है। कंक्रीट क्या बोलते हैं ऊपर? प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट। हाँ NO, यहाँ पे NO नहीं लिखा है, मतलब पहला वाला इनपुट लेता है वो। मटेरियल नंबर ID है, मटेरियल ID। टाइप टाइप के C का क्या मीनिंग है? रेगुलर है। नॉर्मल वेट वहां पे डाला था ना, इसमें रेगुलर वही एक ही चीज है। क्लास हम डालते थे वहां पे 40 के था। किधर भी जाके आप F1 कर दो, वो लाइन पे चला जाएगा। अच्छा मतलब देखो मैं अभी कंक्रीट पे हूँ, 1 दबाए, अब मैं 16 पे गया, वो ST पे गया, स्टील पे गया। तो ये तो मतलब स्टैंड ज्यादा सिंपलीफाइड है, तो मतलब मतलब नहीं ना, लोग तो यूज करते हैं, मतलब लोग तो प्यार करते हैं, मैं तो नहीं करता। मेरा पेट भर गया, बहुत प्यार किया। लेकिन इसमें क्या है कि मतलब सॉइल स्प्रिंग कंस्ट्रक्शन स्टेजेस। अभी आपके द्वार का एक्सप्रेसवे का शैलो टनल नहीं क्या है? 3.6 किलोमीटर का टनल है वो। इधर ये शिव मूर्ति से चालू होता है और आई डोंट नो, हाँ गए बट वो लोकेशन नहीं पता शिव मूर्ति से चालू होता है और एयरपोर्ट का जो रनवे उसको पैरेलल जाते रहता है। दैट इज 3.6 किलोमीटर लॉन्ग टनल। तो उसमें क्या टॉप डाउन कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी, मतलब पहले 2 डायफ्राम वॉल्स करो, पाइल्स करो, फिर गर्डर्स आएंगे, फिर ऊपर सारा कास्टिंग होगा, पूरा 3.6 किलोमीटर कंस्ट्रक्ट करेंगे, फिर एक्सकवेशन होगा। तो ये जो उसका जो सॉइल स्ट्रक्चर इंटरेक्शन वगैरह ये सारा वो कैपेबल है हैंडल कर। मैंने इसमें किया है ऐसा मेरे को तो लगता है। मुझे 2-3 चीज लगती है कि मॉडलिंग के सबसे इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है, एक है बाउंड्री कंस्ट्रक्शन किस चीज से प्रोवाइड करते हैं। अगर बाउंड्री कंस्ट्रक्शन ज्यादा अगर किसी चीज का बहुत ही क्लियरिटी ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन अगर बाउंड्री कंस्ट्रक्शन जैसे मान लो कि इसमें गुजरात में इसमें दिख रहा है आपका सॉफिस्टिक में कि नोड दे रहे हैं जो भी आपने प्रॉपर्टी दिया, इसमें क्या, इसमें कैसे करते हैं, इसमें क्या कमांड है, इसके अंदर से उसी तरीके से देखते हैं। टेडी में क्या, टेडी टेडी का क्या होता है सर? टेडी का कोड जब रन करोगे ना आप, तब आपको ये आउटपुट मिलता है ऐसा, मतलब एसएसडी ये इसका सिस्टम विजुअलाइजेशन का। तो आपको यहाँ पे दिख जाता है ना बाउंड्री कंडीशन क्या है ये। और दूसरी चीज, रिपोर्ट में हर एक चीज निकलता है, कौन सा बाउंड्री कंडीशन वो रिपोर्ट में लिख के देगा। तूने ये मॉडल किया तो रिपोर्ट में बोलेगा कि ये तूने मॉडल किया।
तो एडिट फाइल हमें खुद बनानी पड़ेगी मतलब से। हाँ, बनानी भी पड़ेगी और ये अवेलेबल भी बहुत सारे है ना रेफरेंस में बोलता हूँ। आप अगर टेडी में मतलब आपके पास जो भी रॉ